Assalamu alaikum, guys. This is Amnan Hussain. I am Senior Marketing Strategist at DevSync. So, welcome to our DevOps Summit. I hope you guys can hear me. So let's start this. So DevSync is also providing the learning opportunities to all the fresh grads और undergrads. और हम कोशिश करते हैं कि जितना हो सके लोगों को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें लाइक हमने हमारा फाउंडर्स क्लब फॉर स्टार्टअप्स एंड फॉर स्मॉल कंपनीज हम उनको भी बिजनेस में ग्रोथ करवा रहे हैं. इसके अलावा वी हैव आवर boot camps as well in the universities. We have our internship programs. We have a lot of opportunities for learning. And then we decided कि हम थोड़ा सा टेक की तरफ आके लोगों को एक प्रॉपरली जो ऑडियंस हमें डेवसिंग ऑफिस में ज्वाइन नहीं कर सकती उन लोगों को हम यहाँ पे थोड़ा सा लर्निंग अपॉर्चुनिटी दें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बिकॉज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ही आज के दौर में एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी है आपकी कंपनी की या आपकी अपनी. सो यहाँ से लोगों को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना कि लोग यहाँ से आके लर्न कर सकें डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के बारे में. हमारे पास सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं, हमारे क्लाइंट्स एंड ऑल द थिंग्स. सो हमारा ये कि हम दूसरों को भी एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी दे सकें. इसके अलावा पिछला समिट जो हमने करवाया था वो करवाया था एआई एंड एमएल पे. वहाँ पे भी हमने आप सबको इंटरनेशनल स्पीकर्स को इनवाइट किया था और आप सबको वहाँ से लर्न करने का मौका मिला था. एंड नाउ वी हैव दिस डेवऑप्स समिट. सो वी इनवाइटेड all the speakers from all the वर्ल्ड वाइड प्रेस्टीजियस कंपनीज जहाँ से वो आप लोगों को अपने लर्निंग एक्सपीरियंस के साथ शेयर करेंगे. सो हमारे साथ इस वक्त हैं हमारा पहला सेशन है मिस्टर तेजस चोपड़ा के साथ. ही इज़ आवर स्पीकर फ्रॉम नेटफ्लिक्स एंड करंटली he is in US. Hello Tejas, how are you? Hey, I'm good. Can you hear me? Yes, I can hear you. Perfect. Yes, I'm doing well. Thank you. Okay, Tejas, you can start as your topic is introduction to DevOps and all things. So stage is yours, and I will ask questions at the end. You have 20 to 25 minutes now. Perfect. Okay. Hi everyone. My name is Tejas Chopra. I am a senior software engineer at Netflix, and today I will talk about DevOps, what exactly DevOps means, and for Netflix as a company, what does DevOps mean? The agenda for the talk is as follows. I'll talk about myself, what I do. I'll talk about Netflix, and then I'll go over a brief description of DevOps. I know that we only have 20 minutes, 25 minutes, so it's not going to be exhaustive. And then I'll talk about the flavor of DevOps that Netflix has, some aspects of our culture, and then finally reserve time for question and answers. As you can tell, I look much better in the picture than in real life. I'm a senior software engineer at Netflix. I work on architecting infrastructure for Netflix studios. Netflix does not just stream movies, it also makes movies. Movie making is a very intricate process that requires a lot of nuance in terms of infrastructure. So I help build that. I'm also a founder at GoEB1. For folks that may or may not know, in the US, it's very difficult to get your visas for green cards. And so I started this GoEB1 to help people, build their brand and get the EB1 visa, which gets your green card faster. I'm a tech 40 under 40. I've worked at companies like Samsung, Apple, Box, and Cadence. I'm a TEDx speaker. I talk about blockchain, cloud, distributed systems. And I also teach kids about software. So I'm an adjunct professor at University of Advancing Technology in Arizona. When you think about Netflix, you think about our goal is to win moments of truth. Our founder had a long time ago said that our competition is not some other streaming service. It is sleep. We compete against sleep. So we want to entertain you. And if you look at our architecture, we really have just three layers. Earlier, when Netflix started, all of the content that or the movies were stored in Akamai, which is a content distribution network. To make it simple to understand, you can how do you get movies? You can get movies from the cloud directly streamed to you, but that is going to be very expensive because cloud, whenever you read from the cloud, it charges you money, not just when you store it. So there is a concept called content distribution network, which takes the movie from the cloud, distributes it across the world
in other data centers, and then the one that is closest to you is the one that streams the movie to you. Akamai built a content distribution network that Netflix leveraged. But we realized that this is such a core aspect of our business, so we should own it. And so we developed Netflix Open Connect. Netflix Open Connect is our open source content distribution network that is used to stream movies. But almost all of the compute and storage today that Netflix has is in AWS. When people ask me, how many engineers are there in Netflix, it's an interesting problem. We have more than 220 million members that stream from more than 190 countries. We have thousands of microservices, which is nothing but software modules that run. Thousands of daily production changes are happening. Tens of thousands of virtual machine instances in cloud. Hundreds of thousands of customer interactions per second. Billions of time series metrics. These are metrics that we collect whenever a customer is watching Netflix. So whenever you go and watch Netflix, it's not just the fact that we show you a movie. In whatever you see on your screen, even the tile that you see on the screen and the image that you see in that is customized for you. So we use a lot of metrics to understand that a person likes sunny photos or likes a particular actor or actress. And so we try to show that to that person. So if you see, no two people will have the same view of the same movie in Netflix. And that's because we collect a lot of time series metrics. We have tens of billions of hours streamed every quarter in Netflix. We have just tens of operations engineers, and we have no network operation center. Now, this is very important. A company of our size, for example, I was at Box and Apple, there were thousands of operations engineers at Box and Apple. At Netflix, there are just, I think, 20 or 30 operations engineers, and that's it. Uh, and our engineering team is 10,000 engineers today. And we have no network operation center. We don't at Box and at Apple there's a room where there are like hundreds of screens on the wall with each one showing some graph, and someone is just staring at the screen saying looking at it and like just trying to see if everything is working as per plan or not. Someone took a stab at drawing or like making a graph of how microservices in Netflix interact with each other. Now, this is how they interact. It is humanly impossible to actually understand what's happening here. This is the complexity that we deal with. And so, if we have to have a room full of screens that looks at these microservices, it would be as tall as like the Eiffel Tower. Like it would just be that those many screens, which is like impossible to have. So, in some sense, we have a very different strategy of monitoring our services. Before I get into that, let me now explain what exactly is DevOps. There are traditionally several ways in which you develop software. There is a waterfall model, an agile model, and a DevOps model. And you can say that agile falls somewhere between waterfall and DevOps. So the journey that a lot of companies want to take is to move from waterfall to DevOps. So in waterfall is a traditional approach of developing software. In this model, development happens in a step-by-step manner. You first talk to your customer, get a list of all the requirements from the customer for a software that they want. You design the software, you develop it, you test it, and then you release it. And that's it. Like it's you finish one stage completely, then you move on to the next stage. That's why it's a waterfall model. But the problem is this: in this model, client requirements cannot be understood at once. Sometimes the clients themselves do not know what they want. So it's very difficult once you have started something and once you've reached the phase of development or testing, if someone says, hey, you know what, something has changed in the requirements. Can we go back and fix it? It's not easy to do that. It's very expensive to make those changes during during the process. And therefore, waterfall is used for very siloed projects where you are very sure that the requirements are very tight and will not change. The other extreme is the agile model. In the agile model, you can think of agile as a more iterative model. You still get a set of requirements, but you break it into consumable pieces. You develop small pieces and then you code them quickly. You test it out, but you then send it to the client to review. So it involves a bunch of smaller tasks.
where you plan, code, test, and review. And these actions, these small actions, are broken down into sprints. At Netflix, for example, my team follows a 2 week sprint, which means at the start of 2 weeks, we come together, we discuss, hey, this is what we are trying to work on. And at the end of 2 weeks, this will be our deliverable. And the deliverable is then given to the client or whoever our customer is in this case to see if it meets their requirements. The advantage of Agile is that even if some requirements change, it is easily like absorbed in the development cycle and it's not that expensive to change it. So in some ways, the workflow of agile model is as follows. You have a product backlog, which is a list of features that a client wants. You do a sprint planning, which is you actually sit down with other people and then pick up some tasks from that backlog and you then assign it to yourself or to someone to work on it during the sprint. Many companies have different cadence of sprints. Some have a weekly, some have a bi-weekly, or in a month. And then you plan, code, test, and review, and this is a part of the sprint itself. At the end of it, you have a deliverable product and finally a product review and feedback from your customer. The advantage of the agile model, like I said, client requirements are better understood because of the constant feedback, and product is delivered much faster as compared to waterfall model. But there are disadvantages. Now, because you are doing things in your silo, you actually test it out, you give it to the customer, life is good, you move on. You're working from a sprint to another sprint. But one fine day, when the entire project is over, you want to deploy it to production. And that's where you see a gap because your developers and operations team is the team that is responsible for deploying it in production, for managing the servers, the clusters in cloud, for monitoring them. Because they are working in silos, it's only the development team that is working in sprints. It becomes very tricky when it comes to deploying these softwares. So in some ways, Agile solved the problem between client requirements and development and testing, but it did not address the gap between development and testing and operations and infrastructure. DevOps is an evolution where you are bringing the developer and the operations together. That's why it's called DevOps. And we want to fix this part of the pipeline as well in DevOps. The workflow, according to DevOps practices, is divided into 8 phases. And these are the phases that it's divided into. On the left side are all the development phases. On the right side are all the operations phases. I'll just briefly touch upon those here. So the first one is the plan stage. In the plan stage, business owners and software development team discuss project goals and create some form of a plan. Then programmers design and code the application, and they use a source control like Git to store application code. By doing that, by using Git, what they are doing is they are actually submitting their iterative code to a repository where anyone can pick it up and run it and deploy it. Build tools like Maven and Gradle take the code from different repositories, combine them to build an application. Then comes the testing phase. Application is tested using various automation tools like Selenium and JUnit to ensure software quality. When testing is complete, we have to, now this is the operation side of it. New features are integrated already into the new features are integrated into the already existing code base. So this is continuous integration for which many companies and even Netflix uses Jenkins. And then comes the deployment. Application is packaged after the release and deployed from the development server to the production server. Once the software is deployed, operations team performs activities such as configuring servers, provisioning them with required resources, all of that, which is effectively scaling the servers or changing the machine type and all of that. These all form part of Operate. You can use Chef, Ansible, Terraform, and all of those other tools for that. Um, and finally, once you have done that, there is monitoring, which is constantly, like I said, observing all the different graphs and seeing the impact of what you have developed on the end user. So this is a part of the entire DevOps cycle. And here are some tools that many companies use for DevOps. For the plan, code, build, and test, which falls under the dev category, you have Git for the planning and coding. You have IntelliJ, IDEA, and all of those for writing your code. Your building is Maven and Gradle. We use Gradle in Netflix a lot.
You have testing, and you have Selenium and JUnit. We actually use Spring Boot for our framework, so we use a lot of JUnit tests. Once all of this is done, you want to integrate it with the ops part, and so you use Jenkins for continuous integration. Then comes the deploy, operate, and monitor. So the deploy and operate is done using Docker images, Puppet, or Chef, and monitoring is done using Splunk, Nagios, and other monitoring tools. So now I know I have around 7, 8 minutes here. So let me talk about how we do DevOps. Um, in short, we do not do DevOps. We don't do DevOps in the traditional way at Netflix. So all of this that I said is the ideal world. Like, the my different companies try to adopt these practices. But Netflix is very different because it's very difficult at our scale to do the same practices. We don't uh, we don't have systems that say no to our engineers. So we don't have systems that where at Box and at Apple there were everyone had a time window, where they could commit changes, and no, there were systems for which engineers did not have access. These were production systems, so developers did not have access. Only the operations engineers have access into this, and therefore it was very difficult for engineers to feel freedom when it comes to systems. So everyone in Netflix has full access to all services in production. Now, you may say someone can take down Netflix.com. It has never happened. So it we don't have those systems or guardrails in place for that reason. One of our goals is at Netflix is to hire smart people and get out of their way. So if I hire someone who's good at what they do and is intelligent, then they need to have the freedom to solve the problems in the way that they see best. We look for people that can take responsibility and do not wait for that to be given to them. We do not optimize for uptime at all costs. Now, this is very critical because we are a creative organization. For us, for a company like Box, which was into healthcare, financial analytics, and all of that, uptime at all costs is very important. You have to optimize for being up all the time. So engineers had to, like, write code in that way. At Netflix, it's okay for the system to go down, for a microservice to go down, but what is not okay is for us to not have guardrails in place for or the data in place to inform us of what went down. Repercussions for downtime at Netflix are very different. What we do instead really focus on is velocity of innovation. I want the smart engineers that we hire find ways to delight our customers. Netflix as an organization understands that we will have to trade some uptime for this. It's not that uptime is not important, it's just not our priority. It is keeping our engineers do fun and exciting things that delight our millions of customers. So we don't really focus a lot on processes and procedures. Whatever I just explained, right? Many companies go the extra mile to ensure, like, hey, you have to use Selenium, you have to use JUnit, you have to write code in Java, all of those. Netflix doesn't enforce that. Netflix says every engineer in Netflix is a DevOps engineer. You deal with writing code in whatever language you want. You deal with deploying it in whichever cloud you want. It is your responsibility to monitor it, which is why we don't do DevOps separately. We don't have an operations team. Every developer at Netflix is a DevOps engineer in some ways. My job is not just to write code. My job is to deploy it in cloud. My job is to write the metrics. My job is to monitor it as well. We don't like pass the baton on to the other person on the other side of the wall. We do focus a lot on trust. I read a very nice article the other day, which said that at the very core, everything, everyone you like, everything that you do in your life, the bottom or the most important thing is trust. It is only trust that attracts you to an employer or a person. You have to build trust, and you have to come, and that's what Netflix tries to do. We really focus on trust as a very big component even during our hiring process. Like I said, we do not require standards. We do not force people to use a language. We have code that is written in C++, Go, Java, Python.
um, Scala, some Rust, and of course there is React and Node as well. So let me now spend some time on what DevOps is for me. So I currently work on something called as Netflix Drive, which is a very poorly named system, but it's like Google Drive, but Google Drive for artists that work from around the world and share their assets. It's an edge software. It runs on your MacBook, your Linux machines, or Windows, and it tries to just whatever work you're doing, it will try to sync it to cloud, and then allow other artists to collaborate on an art asset together. For my CI and CD, I use Jenkins for my continuous integration. And for deployment, I use Spinnaker. Spinnaker is an open source deployment tool. Please check it out whenever you get a chance. And I also have testing for Mac VM instances on AWS. For deployments, like this is how you package it and deploy it in the end user's machines. I use Brew and PKG on OS X, Yum on CentOS, and Chocolatey on Windows. For logging, we use Sentry, and we have in-house tools for metrics and observability that I use. So this is just to give you a flavor of what DevOps means for me. And I think that's all that I had to cover today. Please feel free to scan this, connect with me on LinkedIn, Twitter, as well as I have a TalkMate page, so you can reach out to me there as well. Um, One final thing I would like to say is that a lot of people have reached out to me saying that, hey, we want to get internships and all of that. We can. Today, Netflix doesn't hire outside. So you have to be within the US, but within the US, we are remote friendly for most teams. So that's another thing I wanted to mention. Thank ओके you. तेजस, दैट इज सो गुड। आई मीन आई थिंक ऑडियंस को काफ़ी क्लियर हो गई होगी चीज़ें जो आपने एक्सप्लेन कर दी हैं। सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू from the Yes. comments as well. So what are the basic requirement of a DevOps engineer? Because हम ये समझते हैं that the person who does a front end, back end in certain technologies वो DevOps होते हैं और वो ही कर सकते हैं। So इस stereotype का आंसर क्या है? What are the basic requirements? I think basic requirements ये हैं कि at Netflix and I can talk in Hindi also. It's okay. Netflix I'll just say how my interview process was. Yeah, sure. I was given a problem कि ये बनाना है. It's a distributed cache, uh, and that's it. इतना ही बताया था. And they said 2 weekends में बना के आ जाओ जब तुम्हें time मिले. And it is on me as an engineer to figure out कि यार मैं उनको क्या, how do I send that code to them? I can email them the code, or I can push it to a Git repository and share the link to the Git repository. So they wanted us to figure it out, which are the tools we use to actually deliver such a small thing to them. So I use Git for writing my code and pushing the code. I use JUnit tests for testing it, and I deployed it using Docker. So Okay. that helped them see not just the code that I wrote, but the way I think about software. And that's what we want to see engineers doing. Like, it's not that it should be used only in your workplace. Even in your thinking, you should understand that there are these things will only simplify your life, not complicate it. It comes with habit, but that's what we want to inculcate in people. Okay, so what are the common mistakes that a junior developer does when they are going to apply for companies like Netflix, Microsoft, and Google? I think a lot of developers just focus on lead code problems and just like complicated distributed systems and not distributed systems, sorry, complicated data structures and algorithms part. But a lot of people do not focus on system design or how distributed systems work. A good case is like when I ask questions to engineers, I just tell them, "Hey, let's build Netflix. If you were to design Netflix, how would you do that?" And all I want to do is just understand how they think about a problem, how they ask me questions. I think that's another thing. Junior folks generally are hesitant to ask questions, and that's a cultural thing also. We come from a culture where you don't question a lot of things, uh, and so you just assume what's told to you is right. But we want to see if you can get into these uncomfortable realities where you ask questions, come to requirements, then use your basic systems and say, for this interview, I'm not trying to optimize for this, or I'm just keeping it to this, like just carving it out for a smaller problem. That's all we want to look for. So I would suggest people not spend too much time on lead code, but instead spend time on, system design or like thinking about problems holistically. So does open source contributions are considerable or not? वो companies देखती हैं Yes. इसको?
बिल्कुल देखती है, बिल्कुल देखती है. It can eliminate even so everyone knows that 1 hour of coding is not representative of your life of learning. People, Okay. some people are not great at interviewing. I am not great at interviewing. मेरे को बहुत प्रेशर लगता है, and मैं हमेशा भूल जाता हूँ. तो open source contributions help because they can look at your career graph, how you've contributed, and make sure you actually say that these are the things that I've worked on in open source in your resume. Okay. So, what are the three important goals, if I have to ask, for DevOps to focus on? What are the three important goals that you have learned at Netflix or anywhere else? I think many people are great at writing code. Many Okay. people are not great at changing code when things go wrong. So Okay. having the ability to write code that just doesn't work right now, but Okay. can work over the long term as well, and is easily extensible. That is a very big aspect of things to focus on. Many people write code for now, and then if something changes, they have to rewrite a lot of pieces. But if you Okay. can step back and think that the amount of rewrites I want to do should be the minimum amount, that is important. The other thing is when you develop software, you should have many knobs. How many users are there, how many machines are there, all of those. These should be configuration options in your DevOps cycle. Okay. Many people hard code it in their code. So every time something changes, you have to deploy a new version of the code. Instead, they should be a configuration that you can tune. So thinking in the lines of what is configuration and how can you deploy it better is what the other goal should be for an engineer. ओके सो एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहा है कि आपने फिर एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनीज को क्यों छोड़ा व्हाई नेटफ्लिक्स Netflix na. So Apple and Samsung were great, but like I said, Apple may whatever I used to work on, I could only look at that. I couldn't look at what even someone who's sitting next to me is working on because they ओके were not that open to sharing. मुझे मतलब I want to learn, right? Like that's the goal. It's not just about money at some point. It's about growing your career and then money will follow. And Netflix allows you to know about anything and everything. And that's the freedom that I wanted. And secondly, Netflix is more selective about their interviews. So the brand is better in Netflix compared to if you were in Apple or Samsung. That's ओके why I chose that. And they pay better. So that's the ओके simple reason सो only. नेटफ्लिक्स पेज बेटर देन गूगल एंड एप्पल राइट Oh, yeah, yeah. Way better. Way better than what Google is and the Apple. main reason I mean so this is the ultimate motivation for all the young grads Netflix for a young grad, Netflix pays I think around $250,000 per year, okay which is a lot of money if you think a lot about of it. If you're a new grad, right? And it's very simple. Like the idea is we want to get the best engineers. Money should not be a concern. In any country, if you look at it, right, the lawyers, not the lawyers, the chief justice or people that are there, they are paid the most amount of money, and the yes reason is they should not worry about money when making decisions. okay In the same way, Netflix thinks that we should pay the engineers, so money is not the reason that they, optimize for something. And it okay becomes very difficult to leave Netflix after that. so So Netflix is they like that yeah yeah please go ahead. continue ओके सो नेटफ्लिक्स ये करता है कि दे टेक केयर ऑफ एवरीथिंग अबाउट देयर एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय को बस कोडिंग करनी है बैठ के बिल्कुल सब कुछ करते हैं, खाना भी देते हैं फ्री में वहां पे ओके ऑफिस में. बस मुझे खाना चाहिए और मुझे तो कुछ ना दें चलेगा, खाना मैं बना ही पैसा सकता तो हूँ, मिल मेरे को रहा खाना दे दो. है पैसा मिल रहा है, खाना दे रहे हैं. इनफैक्ट मेरे घर से नेटफ्लिक्स जाने के लिए ऊबर का भी पैसा वो देते हैं. ओह So if नाइस I don't want to drive and if I want to take an Uber to go to work, so they pay for ओके the Uber. ओके सो वी So it's हैव 5 minutes मोर सो प्लीज टेल अस yeah, अबाउट योर नेटफ्लिक्स जर्नी कैसे ज्वाइन किया और जो नए लोग आ रहे हैं वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं थोड़ा सा इस बारे में 5 मिनट में बता दें bilkul bilkul. So people that are trying to like join Netflix, like I said, a caveat is that you have to be in the US right now. And for a lot of people in India, Pakistan, and other places of the world, it's challenging. They are based out of there. So assuming you are in the US, at that point, you have to prepare your profile in such a way that you have to show the rigor, and open source projects is a good way. And अपने resume को strong बनाओ. Generally resume strong कैसे होता है? One is you people just put like a lot of languages and चीजें जो उनको पता है, वो सबसे नहीं होता स्ट्रॉन्ग. रेज्यूमे स्ट्रॉन्ग तब होता है जब आप एकदम क्लियरली बता सको कि आपने क्या सॉल्व किया प्रॉब्लम,
कितना परसेंट इंप्रूव की चीजों को, और आपने लीड किया प्रोजेक्ट या आप एक पार्ट थे प्रोजेक्ट के। सेकेंड चीज है, अगर आपने कुछ कॉन्फ्रेंसेस में जाके बोला है, दैट रियली हेल्प्स, बिकॉज उनको लगता है कि यार ये बंदा बोल भी सकता है, कहीं जाके बंदा या बंदी बात कर सकते हैं, एंड दे कैन इन्फॉर्म अदर्स अबाउट देयर ओपिनियंस एज वेल। और थर्ड है ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस। The best part about the world that we live in today is you can be anywhere in the world to work on open source. So I would say a lot of people have posted here, how do I get an internship and all of that? Like, don't worry about it. You are optimizing for the small thing. Pick up any project. Generative AI is such a big thing right now. You know, it's not that difficult. LLMs are there, unke APIs hai. Jao, make something, put it on a website, that like build something on your own that you do not need an internship. You can still build it, open source it, and it is still credible. So optimize for that. And then eventually you will get, like, Googles and Microsofts and Netflixes of the world reach out to you. So and my journey was the same. I spent 10 years in other companies. One fine day Netflix just reached out to me. I went through an interview without preparation, because I realized that lead code is not my cup of tea. I can't do that. So I just told my manager then, I'm not going to do lead code. If you think it is important, give me 2 weeks. He said it's not important, don't do it. And so I interviewed, and the next day I got the offer, and I've been here for three years now. So Okay, so is it that easy, or because it's because of your LinkedIn? Because your LinkedIn is so strong that Netflix, the HR management reached out to you. LinkedIn was very strong, and the other thing was also that someone in Netflix had worked with me previously in a previous company, and they Okay. put in a word for me. So I did not apply, but they just reached out because someone told them that this is a good engineer. Go and reach out to this person and see if they're looking. So that's the network effect is much stronger in Netflix, because to refer someone in many companies, you get like $5,000 if someone you refer gets into the company. Netflix doesn't pay anything like that. They Okay. just rely on, we don't They want are to let people already come into paying it. way more than the other companies. Yes, yes. So they don't give all these things, and people don't want that also. So Okay, so any message for our young audience, especially in Pakistan, because they are watching you, you are their inspiration like that. Because आपका LinkedIn भी अभी flood करने वाला है messages से, so please कोई uh, message, एक realistic message उनके लिए. bilkul, bilkul. First of all, I want to say that a fun fact about me: both my grandparents are from modern day Pakistan. Oh, So nice. my maternal and paternal grandparents are from Lahore and Haripur, that is in Oh, Pakistan right now. And so I have a very, it's a warm feeling for people from Pakistan. I have a lot of friends from Pakistan here. yeah. And I would like to just say that, focus on what brings value to you as an individual first. Do not optimize for internships at big companies. While you have a network internet connection, you can learn anything in the world. Optimize for knowledge. Do not optimize for money. If you and optimize for freedom. When you are free, you do things that you love. When you do things that you love, you get better at it. And when you are better at something, people will pay you for that. So Okay. that's the way you should think about it. That would be my only message. Okay, thank you Tejas. Thank you so much for your Yes, time. I think audience ने काफी ज़्यादा learn किया because आपने काफी insights भी बताए how to get into the bigger companies, how to make your resume, LinkedIn and everything. So DevSing की तरफ से thank you so much and inshallah next absolutely. sessions में भी आपको हम invite करेंगे. Thank you so much. Thank you so much, Dev Singh, for inviting me. I'm very honored, and thank you for everyone who joined in today. Thank you. Thank you so much. Okay, guys. So ये थे Tejas Chopra from Netflix, and now the time. This is the time for the second session, which is with Mr. Piyush Piyush Sachdeva, who is from Google, and he has like 11 plus years of experience in IT field. He also currently working as a technical solution developer with Google in Canada, and he has like 15 certifications in multiple clouds and DevOps technologies. So बाकी तो वो खुद ही आके बताएंगे आपको अपने बारे में. So welcome. कैसे हैं पीयूष आप? थैंक यू सो मच अमरान इनवाइट करने के लिए. आई एम सो ऑनर्ड टू बी हियर. आई एम गुड. आप कैसे हो? Alhamdulillah, Alhamdulillah. I am also fine. Thank you for asking. So let's dive into the DevOps. You have 20 to 25 minutes. Stage is yours, and श्योर. last में हम या क्वेश्चन आंसर कर लेंगे. Thank you. Sure, definitely. So I'll start with a little bit of introduction about myself. Hello everyone, my name is Piyush.
I'm currently working as a technical solutions developer with Google Canada. It's not a development role, but it's into cloud engineering space where I support Google Cloud customers in the issues that they are facing related to mostly work on few services such as GKE, Google Kubernetes Engine, and then all other DevOps tools and services such as cloud monitoring, logging, alerting, cloud build, cloud deploy, and all those. So but GK is my primary specialization, so I work on that primarily. And I have around 12 years of experience within IT, and for the past 5 to 6 years I have been working as a DevOps and cloud specialist. Like, I've worked in different roles such as DevOps consultant, then DevOps tech lead with one of the top 5 Canadian banks, and then I worked as a cloud engineer. Now also I'm working within the cloud support engineering space in Google itself. So I started my career with DevOps and then AWS cloud. Then I started learning Azure, and then when I got into Google, I started with GCP. So I have experience working in all three major cloud providers. uh, if I talk a little about DevOps in Google, so Google does not have, as far as my knowledge is, like, because I have just been here for past 1 year. So, but as far as my knowledge about Google is, Google doesn't have a specific DevOps role. Rather, they have something called SRE. You might have heard of this term before as well. So it's site reliability engineering. This term was initially coined by Google itself like few years back, and then later it was adopted by other companies. So now SRE is a role. बहुत सारी कंपनीज अब SRE इंजीनियर्स हायर करती हैं. They have a specific requirement for it. So how it is different from DevOps? You can consider this as an extension of DevOps. There are some roles and responsibility that overlaps with DevOps, but the main focus of site reliability engineering is to system is up and running all the time, and it is scalable, and proactive and reactive monitoring and alerting. All those are the main focus area of SRE. So when it comes to Google, because as I said, the SRE role itself was created by Google, so they created an SRE handbook. So it's available over the public internet. It's a public document. It's called, if you Google SRE handbook by Google, you will get a link. If you want, I can share the link as well after this. So you can go through that. You can go through the SRE handbook. It's pretty amazing, and this is what I referred while I was preparing for Google. And it has all the amazing concept, like what SRE is, what is the focus on, how it is different from DevOps, and like what do we do as part of SRE in Google, right? So other thing that we focus in SRE is service level objectives, SLOs, service level indicators, service level agreements. So those are also the focus points. And like DevOps, like I said, there are some responsibilities that overlaps with DevOps. So like DevOps, focus is also on automating tasks such as provisioning, deployment, incident response, monitoring, and also it emphasis on reducing the manual toil. So manual toil is something that, it's uh, something called as technical depths as well. So it's when you work on something and you created something, let's say, but if it is hard to maintain, then it could introduce some technical debt in the future. So we need to always make sure that we have to reduce it at any cost. Like, आज आपने कोई product बना दिया, it is working fine today, but let's say in next 1 or 2 years वो टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो गई, या जो कोड आपने लिखा था इट्स नॉट एज पर द फ्यूचर स्टैंडर्ड, और वो अपडेट होने लायक ही नहीं है, आपने किसी लेगेसी एप्लीकेशन में लिख दिया या कुछ भी ऐसा. तो वी मेक श्योर कि ऐसा कुछ भी ना हो. वी मेक श्योर दैट वट एवर वी आर डूइंग, वी डू इट एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, and keeping in mind that it should be maintainable, it should be easily upgradable in the future as well. एंड ऐसा भी ना हो कि सिर्फ आप ही कर पा रहे हो या आपकी टीम कर पा रहे हैं, अदर्स कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू इट, राइट? बिकॉज गूगल्स मेन फोकस इज ऑल्सो ओपन सोर्स. दे पुट अ लॉट ऑफ एम्फोसिस ऑन ओपन सोर्स. गूगल के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो ओपन सोर्स हैं. मोस्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट आपने यूज भी करे होंगे. कुबरनेटिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्पल.
Google में Kubernetes, they have been using it for past like 15-20 years, but then they released it publicly as an open source project in 2014 with Kubernetes project, right? इवन जो गूगल का एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है आज भी वो एक कुबरनेटिस क्लस्टर है, एक बहुत बड़ा कुबरनेटिस क्लस्टर है विच इज स्पैन्ड अक्रॉस द ग्लोब. And when you go and provision a virtual machine in a Google Cloud, वो physically किस location पे, किस physical server में, किस rack में जाके provision होगा, it all depends upon that. जो ये internal cluster है, it's called Borg. ये इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है, तो आप जाके सर्च कर सकते हैं व्हाट इज बोर्गलेट. So Kubernetes is based on that, right? Kubernetes is based on the Borg cluster that Google is using, and जैसे मैंने बोला कि Google has been using it for past many years. So that's one thing. That's one of the open source project, and there are many more. और वो करते ही रहते हैं. तो like they make sure that whatever they are creating, it is easily maintainable even as an open source project as well, right? So that's what I mean by reducing the manual toil. Then other important concept of SRE is enabling early detection of issues, like it's called proactive monitoring and alerting or productive incident management. And then if an incident occurs, then providing the immediate response using the incident management processes, and also conducting postmortem. And these postmortems are like you find आपने कोई issue आया, आपने fix करा, and then you provide a root cause analysis on that, right? But then in Google, as one of the Asari principle is, you don't really blame anyone for the mishappening. Let's say मैंने कुछ प्रोडक्शन पे डिप्लॉय करा और उसने सब कुछ कोड फट गया, एंड बट देयर विल बी नो वन टू ब्लेम मी डायरेक्टली, right? It's called blameless postmortem. We just identify what went wrong, how it went wrong, and how we can improve in future without pointing anyone. We take everything as a team responsibility. Like कुछ अच्छा हुआ है तो वो भी टीम का है, कुछ गलत हुआ है तो वो भी टीम की responsibility है. We make sure that as part of our blameless postmortem, we we work on it, and we make sure that the similar incident doesn't happen again, and we document everything. We make sure the policies are strict. We also implement monitoring and alerting based on the previous lesson learned. So blameless postmortem is really important, and it also not just improve the process and efficiency, it also helps us you know it also helps us in creating a good company culture. Like, how would you feel working in a company when आपने कुछ गलती करी एंड आपको लोग ब्लेम नहीं कर रहे हैं, बट लोग आपको मोटिवेट कर रहे हैं, लोग आपको हेल्प कर रहे हैं कि ये इशू कैसे फिक्स करें और हम आगे ये आने से कैसे अवॉइड करें. So it helps in lot of ways, not just for the customer, but to build the employees morale as well, to make sure that they are delivering 100%, even though if they make mistake, like everyone makes mistake, right? No one is perfect in the world, but instead of blaming them, we can focus on fixing the issue first, and then implementing the processes around, like how we can improve this in further, how we can avoid happening such mishaps in the future. So that's what we focus mostly on, and it is one of the major pillar of Asari principle. Then we also emphasis on making sure the system is secure. We protect user data, maintain compliance and regulatory requirements as per the industry standards. And we, like, as part of SRE role within Google, we also put a lot of emphasis on documenting things and building processes around, so that it's not creating any dependency on someone. Like, anyone could just follow the docs or the playbooks and follow the processes. So it has a lot of impact, again, not just for the customer, but for each and every employee, and as a company as a whole. It put a lot of emphasis on that. So again,
I will share the link shortly about the Google SRE handbook. If you haven't, really looked at it, I would highly recommend taking a look at it. There'll be a lot of content because it's not just one blog or article; it's a complete handbook. So make sure you spend some time on that, and it will help you not just if you are planning for Google, but for any other company as well, because it's built upon the SRE principles. Right. So yeah, that's the most of the things I can and man, if we have some more time, I can talk about my interview experience with Google, or if any Sure, specific topic you want me to cover. that's what I'm here to ask. So lead Okay. us through your Google journey. How did you get Sure. into Google and everything like that? Yes. Okay, sure, sure. So, like I said, I was working earlier when I joined my first. I'll start from the beginning, but I'll keep it short. Okay. So, when I Sure. joined my first company, I started with Accenture in Pune, India, and then I was working as a production support analyst. I worked there for 5 years, and then I moved to another role within India as well, and then I moved to Canada. Once I Okay. moved here, I was new here, I didn't have a job. I was open in the job market, so I was just going through interviews whatever I could get. And then I got and then because I was in that situation where I was literally unemployed in a foreign country, and I didn't have a job, and I was paying my bill, and it was a lot when you bring the money from home country and you convert that into and pay that in dollars. So it was a Yes. lot for me. I was getting out of money, and all my savings were getting lost. So I thought, let's not just focus on DevOps role at the moment, let's focus on getting a job first, so that I Yes. could pay my bills, I could getting myself established, and then I can prepare for. So keeping that in mind, I got my first job again as a production support with Citibank Canada. And while I was in that job, I was preparing for DevOps. So I started everything from beginning. Like, I had some prior experience in Accenture with some DevOps tool, but it was not a lot of that. So मैंने सब कुछ बेसिक से स्टार्ट करा, लाइक जेंकिंस, टेराफॉर्म, कुबरनेटिस, एडब्ल्यूएस से स्टार्ट करा एवरीथिंग. I gave myself some time. I gave myself around a year, but around after 9 or 10 months, I got my first job as a DevOps consultant based on the skill and experience that I have acquired. And I built some projects as well, like, so that I could get that hands-on experience and not just the learning experience. So once I got into the job, I had the opportunity to showcase my skill. I worked hard through it, and in next 6 months, I was promoted as a DevOps tech lead in the same company. Okay. So then, in my project, because I only had experience with AWS Cloud, in my company itself, they were moving to Azure for most of their applications. So I thought it will be a great opportunity for me to learn and showcase my skills. So I went ahead and asked my manager if I could be a part of it. And he said, yes, go ahead. I did AZ 104 certification, Azure Administrator. It was AZ 103 at that time. So I did that, and I built the entire project in Azure. I worked on Azure DevOps, and I learned many tools and technologies at that time. And it was because there was nothing. It was like a greenfield project. So I had to do it on my own, everything. And then I trained my team as well. So it started from there. And then I was interviewing with Amazon for many times, and I was getting rejected each time. So I thought, let me give myself some more time to work on my skill to keep it as per the industry standard. So I gave myself 1 year again for the learning everything. So I did a lot of certification during that time, and a lot of hands-on projects and everything. And then I got this call. Oh no, before that I started my YouTube channel, so that there were many reasons for it. I don't think we have much time to talk about it now, but it also helped me a lot, because every recruiter, every hiring manager was seeing the importance of community contribution. So I was contributing to the community through my YouTube channel, through my LinkedIn posts, through my blogs. I do blogging as well, Yeah. and it really helped me elevate my skills and everything. So that's when I thought, like, I should keep it continuing, and that's how a Google recruiter reached out to me. And again, I was really afraid because I didn't have a lot of data structure and programming experience. Like, my core expertise was in cloud and DevOps scripting,
But that's it, right? I didn't have a lot of programming and DSA experience. So but this role, a specific role, it did not require me to have that DSA experience. So that's one of the myth that most of us have these days. Like, do we need DSA? Do we need programming, a hardcore programming experience to get into companies like Google and Amazon? So answer to that, short answer to that, it depends on the type of role. If you are applying for roles such as SD role, SUI role, that is the core into development, then yes, you do need that. But if it is a cloud specific role and cloud, and not just cloud, but cloud development role, but cloud support or cloud consultant, solution architect, technical account managers, these type of role does not require you to have DSA and a hardcore programming experience. Just you should know how to read the code, how to troubleshoot the code, and basic fundamentals, right? Okay. So फिर interviews schedule हुए, and then there were around 6 rounds back to back. First was with the recruiter itself, so that was just introduction about my experience and whatever I know. So that was okay, and then 5 rounds in one day, and it was like 45 minutes ka round, and then 10 minutes break, then another round, and back to back rounds थे. तो इफ आई समराइज दैट, एक राउंड था उसमें ट्रबल शूटिंग का, जिसमें आई वाज गिवन अ कोड स्निपेट एंड आई हैड टू debug the code, I had to dry run the code and tell them the issue in the code, right? So just to know, like, whether you are capable of troubleshooting the code or not. That was one. There was one system design round, and it was not an advanced system, it was, I guess, a medium level round. And then there was a round for, like, there was a couple of technical rounds जिसमें बहुत सारे Linux administration, troubleshooting, and customer facing questions वो सब पूछे थे. Then there was a round in Google specifically, which is called Googliness and Leadership round. So Google has some leadership principles, and based on that, they ask you some behavioral and hypothetical questions, like, tell me a time when this happened and how did you reacted to it, or hypothetical questions such as, let's assume you are a manager of this team and something happened, what would you do next? So this type of question comes under googliness and leadership round. Again, there is, if you Google philosophies, you will see a link. I will share the link as well. It has all the details, like all the principles on which Google is based and on which they interview candidates. So that is also really helpful. Then there was one more round in which they talked about my experience, like जो मैंने बताया था उसमें से follow up questions, and mostly around, like, okay, I cannot discuss the question, but it was mostly around Linux administration, DevOps, and cloud technologies, right? Okay. And it didn't matter, like, because I was applying to Google, it they didn't expect me to have GCP experience, but they expected me to have a cloud experience, because cloud is same, PaaS will be PaaS, वेब एप्स विल बी वेब एप्स, मतलब सब कुछ सेम ही रहता है, सारे जस्ट सर्विसेज का नाम बदल जाता है, इम्प्लीमेंटेशन बदल जाती है. तो क्योंकि मेरे को AWS और Azure में एक्सपीरियंस था, तो इट हेल्प मी showcase that experience in GCP terms. So I clearly mentioned in the beginning, like, I didn't have GCP experience, but I do have an extensive experience with AWS and Azure and all other things. And yeah, that really helped me. And that was the interview day. And after a couple of months, because it was a holiday time, after a couple of months, there was one more round. It was not an interview round, it was an informal discussion with the hiring manager, in which I had the opportunity to ask them questions, like whatever I had about the team, about Google as a whole, or about the roles and responsibilities, everything. So it was, and that didn't have any impact on the hiring decision. It was just informal discussion. It Final was off discussion. the records. Yes. Okay, तो so did ये you सब था. negotiate And on the yeah, salary? salary, I tried. I tried a lot, but yeah, I mean, जो भी अपनी तरफ से वो कर सकते थे, उन्होंने बेस्ट करा. I don't have any complaints.
बेस Okay. पैकेज कम था इस रोल का, बट दे कॉम्पनसेटेड दैट ऑन इक्विटी एंड ज्वाइनिंग बोनस, सो आई वाज हैप्पी. That's good. Yes. या So from a jobless man, and in few years, you just landed at Google. So don't give up on your dreams. Dreams comes true, yeah right? yeah actually we just have to keep trying, and we Yes. keep working on our on upgrading ourselves, upskilling ourselves. um, जब मैं रोल्स ढूंढ रहा था, like I was rejected by Amazon for like 7 8 times. So I could have gotten depression, or I could have give up at that time, because it's not easy to going into the company again and again after every few months, and giving the interview and getting rejection every time. So every time I got that rejection, I didn't just कि मैं घर पे आके उदास होके बैठ गया, मैंने वैसा नहीं करा. I just formulated a plan कि आज ये मेरा इंटरव्यू हुआ, what went wrong. I worked on Okay. that कि ये स्किल है जो मुझे नहीं पता, तो I have to work on it. So I, like I said, I gave myself some time to work and study on myself. तो जो भी मेरी शॉर्टकमिंग्स थी, जो भी मेरी जो भी थी, जो मुझे लग रहा था कि मुझे इसमें काम करना चाहिए, दैट इज कंटिन्यूअसली बीइंग आस्क्ड इन द इंटरव्यूज. सो मैंने उस पे काम करा. आई वर्कड ऑन माई सेल्फ, एंड आई वर्कड ऑन माई स्ट्रेंथ्स एज वेल, लाइक एन इंटरेस्ट एरिया. लाइक इट्स नॉट लाइक कि अगर मुझे डेवलपमेंट नहीं आता तो मैं बाकी सब छोड़ के मैं जावा सीखने बैठ गया या जावा स्क्रिप्ट सीखने में, बिकॉज दैट इज नॉट माई एरिया ऑफ इंटरेस्ट. अगर मैं वो कर भी लूंगा, मान लो आज कर लिया, चलो जॉब मिल गई, लेकिन if we look at this in the long term, 4 5 years later, I would see like मैं जॉब कर रहा हूँ, but am I really enjoying it? If I'm not enjoying it, it is paying my bill, but then I will start looking for a second source of income. कि ठीक है, अब मैं हो गया, अभी मेरे बिल्स पे हो रहे हैं, सब ठीक है, लेकिन अब मैं कुछ और करना चाहता हूँ जो जिसमें मुझे इंटरेस्ट आए, जो मुझे करने में मजा आए. मुझे सिर्फ 9 to 5 जॉब नहीं करनी, मुझे 9 to 5 वो जॉब करनी है जो मेरे बिल्स भी पे करे और जिसमें मुझे करने में मजा भी आए. So I found this as my area of interest. I like troubleshooting issues. I like working on DevOps, CI/CD, cloud technologies, implementation. तो और ये मुझे नहीं पता लगता अगर मैं ट्राई नहीं करता. तो the only advice I would give, try everything. If you are in college, then it is the best time to explore everything. Try it out, everything, like backend engineering, full stack, front end development, uh, And the most सब कुछ. important is Hmm. updating yourself along with the trends, industry trends, technology Yeah, trends, right? actually, exactly. Yeah, because the way we are rapidly changing, there are so many rapid changes in the IT industry. Ki 5 years back, the skill that was hot in the market, it's not even relevant today. So we have to keep this in mind. Like if you are not upgrading yourself, someone somewhere out there upgrading himself or herself, and that person will get your job. So don't let it happen. Just keep yourself upgrading, keep yourself up to date to the market, and keep learning every day. So अभी मुझसे लोग पूछते हैं, now you are in Google and I don't think you will have any plan in the future to move to another company, but why are you still doing certification? Why are you still implementing the projects? And I said, like, I am in Google today, but if you look at the current trend in the market, no job is secure. So Yes. we have to keep that in mind. Like कंपनी हमारे पापा की नहीं है, और पापा की भी है तो पापा मिनट नहीं लगाएंगे निकालने में अगर मार्केट Yeah. खराब हुई तो. ठीक Mhm. है, इट्स ऑल अबाउट प्रॉफिट मेकिंग. तो वी हैव टू कीप आवरसेल्फ रेडी विद द मार्केट. वी हैव टू कीप आवरसेल्फ अप टू डेट कि अगर भगवान ना करे आपके साथ कुछ भी होता है रिगार्डिंग टर्मिनेशन और एनीथिंग, देयर बी अ लाइन ऑफ कंपनीज दैट आर रेडी टू हायर यू. आपके पास जॉब की कमी नहीं होनी चाहिए, भले ही आपका टर्मिनेशन हो गया, कुछ भी हो गया. और वो तभी हो सकता है व्हेन यू कीप योरसेल्फ अपस्किल्ड इन द मार्केट. Okay, so I have a couple of questions from the audience. श्योर. मैंने अभी Yep. comments से start किए हैं. So first one is, can a fresh graduate get a job as a DevOps engineer or SRE at Google? I'm not really sure about Google, like because most of these roles, like SRE roles, they require some experience, but you can definitely try for the internship roles. It time to time, like in fall, summer, or there are time to time internship opportunities that do open. So try to apply on that, and once you get in the Google, you can definitely move up the ladder. Or
ऐसा भी नहीं है कि अगर आप एक रोल में आ गए और आपको पसंद नहीं आ रहा तो यू हैव टू चेंज द कंपनी। इंटरनली विद इन गूगल यू कैन मेक अ स्विच आफ्टर स्पेंडिंग सम टाइम इन दैट रोल। You can move to other roles as well with just a couple of interviews, and just prepare for that role which you are aiming, and you can move to that role. So Okay, so that's what I before would say. Mhm. okay, so before becoming SRE, should we also need to have experience in DevOps? uh Yes, I would recommend that, because it's just as I said, it's there are a lot of things that overlaps between cloud and sorry, with DevOps and SRE. So it's more or less the same thing. So yes, you should have some experience and hands-on knowledge on DevOps as well. Okay, And and SRE how role to in get Google does require, sorry to interrupt you. I just no, no, had please. to mention this point before I forget. SRE role in Google, there are two type of SRE roles. I'm forgetting the type of it, but one requires DSA, one doesn't require DSA. So Okay. I would say a beginner to medium level DSA is required for SRE role if you are planning for Google. Okay, and how to get first job in DevOps if you are changing career from non-tech field? Okay, so this is what I would say based on what I have seen around the community. So what people are doing, they are contributing to the community. That's one of the important thing, right? And they are making their presence visible out there in terms of hiring managers and recruiter. Like, they are not just building projects, they're helping others as well to build the projects. And when you get the, let's say, so there are two things. One is doing certifications, another thing is building hands-on projects. So certification to get the knowledge, to acquire the skill sets, and once you have that skill set, you use that to implement the hands-on project. Okay. Without hands-on, your certification won't be of any use, and without certification, your resume won't be having that much visibility out there, right? So I would say, if you are beginner, fresher, go with these two things side by side, and try to help community as well, and you'll get some contacts, you will do the networking. Try to attend the meetups that is happening around, like virtual meetups like this one. Try to attend these, get some networking with the people who are there in the industry. Try to understand their experience, and it will definitely help you get the job. But don't just aim for the bigger roles in the beginning. You can aim for the fresher role, because even if you have, let's say, 5 years of experience into sales and you are moving into DevOps or cloud, I would say start from the beginning, start from the junior level roles, so that they won't really focus on your past experience. Once you are there, because you have already some experience in the industry, if even if it is not the end industry, you will have some experience out there, तो आपका जो maturity level होगा वो बाकी लोगों से ज्यादा होगा. You will easily understand the things, and you will अच्छा, move up the ladder soon. फिर और बाद में हमारे switch कर सकते हो. जी जी, और हमारे लोगों का ये होता है कि वो कहते हैं कि डायरेक्ट गूगल में जाएं। उनको ये नहीं होता कि हाँ, यूएस में ये या नहीं, कहीं पे ये भी पहले नहीं, छोटे नहीं. स्टार्टअप में जॉब कर लें, कहीं किसी कंपनी में लैंड हो जाए, कोई रिमोट जॉब कर लें, वो डायरेक्ट हाँ, गूगल में घुसने की कोशिश नहीं, करते हैं। ये बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आज भी लोग ना क्या करते हैं, एक चीज पे फोकस करते हैं कि मुझे रिमोट जॉब चाहिए. आजकल रिमोट जॉब का जैसे ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, मुझे रिमोट जॉब चाहिए, या फिर मुझे फैंग में ही जाना है. ये मत करो. आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए गेटिंग अ जॉब. जॉब जो कि आपके बिल्स पे कर सके. एट द एंड ऑफ द डे किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आप गूगल में हो, अमेजोन में हो, या माइक्रोसॉफ्ट में हो. आपको और आपकी फैमिली को ये फ़र्क पड़ता है कि आप अपना घर ढंग से चला पा रहे हो कि नहीं, आप अपनी जॉब में खुश हो कि नहीं, ठीक है? वो उस पे फ़ोकस करो, रेदर दैन कि वो 4 लोग क्या सोचेंगे, या फिर कि आप इसमें चले गए तो आपकी रेपो बन जाएगी, या फिर आप लोग आपको जानने लगेंगे. वो सब चीज़ों पे फ़ोकस मत करो. आपका मेन फ़ोकस होना चाहिए आपके बिल्स कैसे पे होंगे, और आपकी फैमिली कैसे गुज़ारा करेगी उसमें, ओके, वो सो फ़ोकस वी हैव होना चाहिए. लास्ट 5 मिनट्स, तो हुँ. एक क्वेश्चंस ले लेते हैं ऑडियंस से ही। व्हाट आर द की Sure. प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ डेवऑप्स एट गूगल? इसको सम अप हुँ. करते हैं आप थोड़ा-सा। हाँ, वो मैंने आपको बता ही दिया एसआरई प्रिंसिपल्स, और बिल्कुल। एसआरई की मैं हैंडबुक में शेयर कर दूँगा आपको. आप अपने ऑडियंस श्योर, के साथ शेयर कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में श्योर। आप डाल सकते हो यूट्यूब के, तो वो ओके, मैं शेयर कर दूँगा उसके बाद. so and what are some specific tools and technologies used by Google in their DevOps workflows for efficient software deliveries, I must say?
Okay, so I would say like most of the tools are internal. Like Google के पास they have a lot of expertise जो कि in-house tools बनाते हैं. Like I said, Kubernetes in-house बनाया और बाद में open source कर दिया. तो ऐसे ही internally बहुत सारे tools हैं जो mostly वो use करते हैं. But if we talk about the tools that are there in the market, so I would say uh, like Argo CD for Okay. Kubernetes CD and Google के जो internal GCP services है cloud build, cloud deploy that Kubernetes itself, like अगर आप Kubernetes पता है तो it doesn't matter whether it is AKS, EKS or GKE, it's one and the same thing. It's just a Okay. managed service on top of that. Okay. Then Prometheus and Grafana for monitoring and alerting, because Google also has a managed service of Prometheus, which is called Google Managed Prometheus, right? Okay. For monitoring, they have this service called Looker, Looker. So Looker is what we use mostly. And then we have what else? For infrastructure as a code, we mostly we Google has Cloud Manager, Cloud Deployment Manager, which is like ARM template in Azure or CloudFormation in AWS, and but now it's been deprecated. Now Google also uses Terraform. So Okay. Terraform is another infrastructure as a code, like a must-have tool. Okay. And I cannot talk about the internal tools, but these are all इतने the बहुत external tools. Yes, Huh? इतने बहुत है. Okay, so last question as we have 3 minutes left. So can you describe the typical career growth prospects for someone starting their DevOps journey at Google or Mhm. any big company? And Mhm. इसके साथ ही आप हमारी यूथ को, पाकिस्तानी यूथ को भी कोई एंड में कोई मैसेज देना चाहें तो प्लीज. The typical career path would be, I would say, first work on your skill set. Like, look at the job description in your area. Like, if you do a Google search, like LinkedIn पे search या फिर Indeed, Monster, जो भी site चलती है आपके area में, just do a quick search of DevOps or cloud and see the job description of all the companies. Like, you don't have to know everything written in the job description, because वो उनका एक टेम्पलेट होता है. कई बार तो ऐसा होता है कि वो कुछ भी डाल देते हैं which is not even relevant to the job. But look for the points that are common in most of the job openings. Like most of the job openings will ask you Docker and Kubernetes, or Prometheus Grafana, or Terraform, or cloud provider experience like AWS or GCP or Azure. So look for those common things, and then you will get to know what are the things that you have to work on, and build some hands-on project around that. Write some blogs, share it across, get your visibility out there. So it's also called building yourself a personal branding. Like people should know by your name, like what are your expertise with. And that would only happen when you showcase your skills out there, when you help others, when you really do something for the community. So whatever works for you, do that, and make sure you acquire the required skill set before you start applying for the job. And once you start applying for the job, there'll be a lot of rejections. So ओके. बी प्रिपेयर्ड विद इट. लाइक ऐसा मत सोचो कि मैं 10 जॉब अप्लाई करूंगा, उसके बाद मुझे नहीं मिलेगी तो मैं गिव अप कर दूंगा, या फिर मुझे 20 जॉब में तो मिल ही जानी चाहिए. ऐसा मत सोचो. ऐसा सोचो, दिस इज जस्ट अ जर्नी. एक इंटरव्यू दो और उसको भूल जाओ. आई थिंक अगले आपकी इंटरव्यू के लिए जर्नी प्रिपेयर सबके लिए करो. इंस्पिरेशन है. आपने मतलब कुछ नहीं थे जब शुरू किया था और कुछ सालों में आप गूगल में हैं, तो वो एक फेलियर की एक पूरी दास्तान है, वो कोई नहीं देखता, वो बस गूगल नजर आता है सबको. क्योंकि मैं, द वे आई सी इट, आई डोंट सी इट एज अ फेलियर, आई सी इट एज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी. जब मैं कोई हाँ. इंटरव्यू देखता हूँ, मैं जब इंटरव्यू देने के बाद ये सोचता हूँ मुझे आज इससे क्या सीखने को मिला, या मैं इससे क्या सीख सकता हूँ, एंड आई वर्क ऑन दैट. अगर मैं गिव अप करके बैठ जाऊंगा तो मैं कोई जॉब में कर ही नहीं पाऊंगा, या फिर मैं कहीं पे भी इंटरव्यू दे ही नहीं पाऊंगा. राइट. तो मेरा ऐसा रहता है, इंटरव्यू दिया, अगर मान लो इंटरव्यू दे के आया हूं, मैं आके मैं उस पर काम करता हूँ कि क्या क्या पूछा मेरे से, मुझे आता था कि नहीं आता था. नहीं आता था तो मुझे वो अगला आगे पढ़ना है. आई जस्ट मेक अ टू डू लिस्ट आउट ऑफ इट. एंड उसके बाद मैं ये देखता हूँ कि इंटरव्यू दे दिया, अब मैं उसको भूल जाऊंगा, अब मैं इसको साइड में रख दूंगा. ठीक है, अब मैं दूसरे इंटरव्यू के लिए आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. इंटरव्यू से जिस दिन रिजेक्शन आ गया, उस दिन मैं थोड़ा बहुत सोचूंगा, उस पर काम करूंगा कि क्या गलती हुई. मे बी आई वोंट स्टडी दैट डे, बिकॉज यस, थोड़ा बहुत तो दुख होता ही है,
बट ओनली फॉर दैट डे। कल से एक नया दिन शुरू होगा, कल से एक नई प्रिपरेशन शुरू होगी नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए। सो आई जस्ट कीप दैट थॉट इन माइंड कि जब मैंने ये स्टार्ट करा है तो मैंने किस लिए स्टार्ट करा है, मेरा गोल क्या है। मेरा गोल है टू गेट इनटू आईटी, टू गेट इनटू डेवऑप्स। सो जस्ट कीप रिमाइंडिंग माई सेल्फ दैट गोल कि व्हाई आई स्टार्टेड इट। whenever I feel demotivated, I just keep reminding myself why I started it in the first place. Because अगर मैं गिव अप कर दूंगा तो क्या होगा, मैं क्या करूंगा, मैं और कुछ नहीं कर सकता। तो मुझे यही करना है, मेरा यही गोल है। तो जस्ट आई यस, जस्ट फोकस ऑन दैट। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आई मीन एक ऑडियंस के लिए भी एक बिल्कुल इंस्पिरेशन है आपकी जर्नी। आपने जिस तरह से एक्सप्लेन की हर चीज़, और खासकर ये यंग जनरेशन को जिस तरह से तेजस ने भी और आपने भी, आई थिंक इंडियंस आर ऑल ओवर द प्लेस, और जिस तरह से वो इंस्पायर कर रहे हैं वर्ल्ड दुनिया को भी, और आज आपने हमारी ऑडियंस को भी किया, सो दैट इज कमेंडेबल। थैंक यू सो मच अगेन। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आई एम ग्लैड दैट कुछ भी, अगर मेरे कुछ भी यहाँ पे बोलने से किसी का भी थोड़ा बहुत भी किसी को कोई डायरेक्शन मिली या इट वाज हेल्पफुल, सो आई विल बी रियली हैप्पी। सो थैंक यू यस, सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड इट वाज अ थैंक यू सो प्लेजर मच। टॉकिंग टू यू। एंड गाइस, मैं थैंक यू। इनकी वो जो बुक है वो मैं जरूर कमेंट्स में डाल दूंगा। डू सेंड मी दैट, पीयूष। श्योर श्योर, आई विल डू दैट। यस, Okay. थैंक यू Thank you सो so मच। much. Thanks. Take care. Bye bye. ओके, सो दिस इज आवर क्विज टाइम। सो क्विज का लिंक मैंने ये क्यूआर कोड में अटैच कर दिया। यू कैन स्कैन दैट एंड यू कैन सॉल्व द क्विज, एंड द क्विज विल बी offline in 15 to 20 minutes, so please do it quickly. And for the next speaker, I would like to invite Mr. Hamidullah Khan, and he has like 18 years of experience, leadership experience, and also 12 years of mastery in AWS cloud ecosystem. He has also worked in many companies, and he's now running his own startup. So please welcome Mr. Hamidullah Khan. Assalamu alaikum. कैसे हैं सर आप? वालेकुम सलाम जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? Alhamdulillah. So the stage is yours. Please start with your topic. So we will have the Q&A session at the end. Okay. ओके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि हम उसी ट्रैक पर हैं। अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चन हैं और आप ट्रैक चेंज करना चाहें तो फील फ्री टू मैसेज मी, बिकॉज आई लाइक टू शेयर वॉट एवर आई हैव लर्न। तो आज हमारे जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे माइक्रो सर्विसेज एंड कंटेनर्स। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डेवऑप्स, एंड डेवऑप्स के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डेव सेकऑप्स। ये डेव सेकऑप्स का क्या रोल है डेवऑप्स में। और ये तीनों चीज़ों के साथ साथ मैं क्योंकि मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे बिगिनर्स हैं जो कि ऑब्वियसली जॉब फाइंड करने में इंटरेस्टेड होंगे, रेलिवेंट जॉब। तो आई विल शेयर सम टिप्स एंड ट्रिक्स कि हाउ यू कैन स्पीड अप योर लर्निंग, किस तरीके से आप अपनी लर्निंग को फास्टर कर सकते हैं और किस तरीके से आप इंडस्ट्री में जॉब ले सकते हैं इजीली एक्सपीरियंस गेन करके। तो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद माइक्रो सर्विसेज। माइक्रो सर्विसेज क्या है? माइक्रो सर्विसेज बेसिकली थोड़ा सा अगर हम बैकग्राउंड दें, क्योंकि हमारे पास बिगिनर्स ज़्यादा तादाद में है, तो हम थोड़ा सा माइक्रो सर्विसेज से पहले अगर ट्रेडिशनल इन्वायरमेंट में जाएं तो हमारे पास पहले होता था एक सर्वर होता था जिसपे हमारी एक वेब एप्लीकेशन रन हो रही होती थी। वेब एप्लीकेशन जो है वो हमारी वेबसाइट या कोई और वेब एप्लीकेशन जैसे ई कॉमर्स स्टोर वगैरह, वो एक सिंगल सर्वर पर रन हो रहा होता था। फिर जब ट्रैफिक आना शुरू हुआ तो लोगों ने बोला कि भाई अब हमारे पास ट्रैफिक ज़्यादा आ रहा है, तो उन्होंने बोला कि अब हमें जो है मल्टीपल सर्वर्स रन करने पड़ेंगे। अब वही एक सेम एप्लीकेशन जो एक सेम सर्वर पर रन हो रही थी और सारा कोड बेस जो है वो मर्ज था। जैसे अगर आप लोग वर्डप्रेस के साथ फेमिलियर हों तो वर्डप्रेस में आपका फ्रंट एंड बैक एंड सारी चीज़ें जो है वो वर्डप्रेस का पार्ट है। तो वर्डप्रेस इज एन एग्जांपल ऑफ मोनोलिथिक एप्लीकेशन। मोनोलिथिक वो होती है एप्लीकेशन जिसमें एक एप्लीकेशन में आपका सारी लॉजिक, बिजनेस लॉजिक, सारा जो बैक एंड का कोड है, सारी जो ऐप के एल्गोरिथम्स हैं, वो मोनोलिथिक एप्लीकेशन होते हैं। उसका जो एक ऑल्टरनेट फिर लोगों को समझ में आया कि भाई अगर हमारे पास ट्रैफिक ज़्यादा आना शुरू हो जाता है कुछ पीक टाइम्स में, जैसे जब शॉपिंग का सीज़न आता है, लोग ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाते हैं और शॉपिंग करते हैं, अमेजोन प्राइम होता है, दुकान जो हमारे पास दराज है, सॉरी दराज पाकिस्तान में, उसका एक जो है सेल्स का डे आता है, तो उसमें लोग जाते हैं दराज पर और दराज पर ट्रैफिक बढ़ जाता है। तो इस ट्रैफिक को कैसे हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि जो मोनोलिथिक एप्लीकेशन है वो तो इस तरह डिज़ाइन हुई कि इतने मिलियंस ऑफ यूजर्स के ट्रैफिक को हैंडल कर सके। क्योंकि जब से हमारे पास मोबाइल डिवाइसेस और ये सारी चीज़ें हैं तो लोगों के पास ये सारी चीज़ें बहुत एक्सेसिबल हो गई। तो फिर जो आर्किटेक्ट्स हैं उन्होंने फिगर आउट किया कि हमें इस एप्लीकेशन को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा माइक्रो सर्विसेज में, बिजनेस लॉजिक को
सेपरेट करना पड़ेगा। तो पहला जो ब्रेक डाउन किया वो फ्रंट एंड और बैक एंड को सेपरेट किया, कि जो यूआई है वो बैक एंड से सेपरेट करेंगे, बैक एंड लॉजिक सेपरेट होगी, यूआई सेपरेट होगी। बट दैट वाज नॉट इनफ। फिर फिगर आउट किया कि अच्छा अब इसको फर्दर कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला जो बैक एंड में हमारे पास डिफरेंट बिजनेस लॉजिक, उनको हमें ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। अच्छा, अब उसको कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं? बैकएंड में लॉजिक हमारे पास क्या होती है? अगर हम एक ई कॉमर्स स्टोर की एग्जांपल लें, राइट, हमारे पास एक ई कॉमर्स स्टोर है और ई कॉमर्स स्टोर में हमारे पास अकाउंटिंग होती है कि कितनी जो है वो प्रोडक्ट सेल हुई और कितने की सेल हुई। स्टॉक होता है कि कितनी प्रोडक्ट्स रिमेनिंग है इन्वेंट्री में, कितनी प्रोडक्ट जो है वो हमें और ट्रांसफर होंगे बेस्ड ऑन द लोड दैट इज कमिंग ऑन द साइट। सही है। और उसके अलावा हमारे पास होता है ऑर्डर प्रोसेसिंग, जब ऑर्डर आ गया उसे प्रोसेस करना है। ये 3-4 एग्जांपल्स हैं, राइट। तो अब जब ये हमारे पास बैकएंड में ये 3-4 एग्जांपल हैं, तो उन्होंने डिसाइड किया कि अच्छा ई कॉमर्स की अगर हम बात करें तो हम इन सारी चीज़ों को अलग अलग सर्विसेज में ब्रेक डाउन करते हैं। अलग सर्विसेज में ब्रेक डाउन करने का मतलब क्या है कि अकाउंटिंग की जो सर्विस है उसका अपना डेटाबेस होगा और वो बिल्कुल ही सेपरेट बिल्ट होगी, उसका बाकी सर्विसेज से कोई काम नहीं होगा, कोई कांटेक्ट नहीं होगा, कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी। और जो सेल्स की सर्विस है वो एक सेपरेट डेटाबेस, सेपरेट कोड बेस के साथ बिल्ड होगी, पूरी आइसोलेटेड, कंप्लीटली आइसोलेटेड। इसका एडवांटेज क्या हुआ? इसका एडवांटेज ये हुआ कि अगर हमारे पास एक टीम ऑफ डेवलपर्स हैं, उसमें से कुछ लोग जो है वो अकाउंटिंग एप्लीकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, कुछ ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, कुछ की जिम्मेदारी है कि वो सेल्स की जो हमारी सर्विस है उसके ऊपर काम करें। तो अब ये टीम अपने अपनी सर्विसेज पे विदाउट एनी ब्लॉकेज काम कर सकती हैं, एक दूसरे पर उनकी डिपेंडेंसी नहीं है, एक दूसरे को वो ब्लॉक नहीं कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि न्यू फीचर्स रिलीज करने हैं, क्योंकि अब मार्केट इतनी कॉम्पिटिटिव हो गई है, तो न्यू फीचर्स रिलीज करने हैं। अब जो सेल्स एप्लीकेशन है उन्होंने जो है 3-4 फीचर्स बिल्ड कर लिए। अगर हम ट्रेडिशनल एप्लीकेशन की बात करें जहाँ पे हमारे पास मोनोलिथिक होती है कि एक सिंगल एप्लीकेशन में सब कुछ है, तो सेल्स एप्लीकेशन अपने फीचर रिलीज नहीं कर सकती, क्योंकि अकाउंटिंग के कुछ फीचर्स उन्होंने जो बिल्ड किए हैं वो अभी टेस्टिंग में है। तो सेल्स जो है वो ब्लॉक हो गई अब अकाउंटिंग के वजह से। मगर माइक्रो सर्विसेज में ये नहीं होता। माइक्रो सर्विसेज में ये होता है कि सेल्स ने अगर अपने फीचर बिल्ड कर लिए, वो अपने फीचर्स की टेस्टिंग एंड क्यूए करते हैं और वो उनको रिलीज कर देते हैं। क्योंकि ये सेपरेट कोड बेस और सेपरेट डेटाबेस के साथ वर्क करता है, तो उनकी आपस में कोई डिपेंडेंसी नहीं होती। तो इस वजह से माइक्रो सर्विसेज जो है वो फिर काफी फेमस हुआ जब लोगों ने रियलाइज किया कि उसमें उनके पास स्केलिंग के ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं। माइक्रो सर्विसेज के साथ जैसे मैंने शेयर किया मोनोलिथिक। अब जब आपको ये डिसीजन लेना होता है एज अ डेवऑप्स इंजीनियर या एज अ आर्किटेक्ट, अगर आपकी टीम बड़ी और उसमें एक डेडिकेटेड आर्किटेक्ट है, तो वो आर्किटेक्ट ने बिजनेस रिक्वायरमेंट की बेस पे डिसीजन लेना होता है। हर जगह पर माइक्रो सर्विसेज वर्क नहीं करती और वो इतनी जो है यूजफुल नहीं होती। जैसे एक एग्जांपल, अभी रिसेंटली एडब्ल्यूएस की जो वीडियो सर्विस है, उन्होंने माइक्रो सर्विसेज से अपने आप को वापस मोनोलिथ पे माइग्रेट किया, क्योंकि उन्होंने रियलाइज किया कि जब वो माइक्रो सर्विसेज यूज कर रहे थे तो उनकी जो बिजनेस रिक्वायरमेंट थी वो माइक्रो सर्विसेज मीट नहीं कर पा रहा था, बल्कि उनकी कॉस्ट भी बढ़ गई थी और उनके जो ऑपरेशनल ओवरहेड था वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था। तो उन्होंने फिर अपनी बिजनेस रिक्वायरमेंट और टीम के जो ऑपरेशन उनको सामने रखते हुए वापस डिसाइड किया कि हमें मोनोलिथिक पे जाना पड़ेगा। और जब उन्होंने मोनोलिथिक पे माइग्रेट किया तो उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा सेव हुई और उनकी जो टीम की प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई। तो अगेन, माइक्रो सर्विसेज आर वेरी यूजफुल, मगर आपने मेक श्योर करना है कि आप जब ये डिसाइड करो कि आपने माइक्रो सर्विसेज पे जाना है या मोनोलिथिक पे, आपके सामने आपकी बिजनेस रिक्वायरमेंट और आपकी जो टीम है उनकी कैपेबिलिटीज, उनके ऑपरेशन, क्या आप उसको मैनेज कर सकते हैं या नहीं। अब जब हम माइक्रो सर्विसेज की बात करते हैं तो साथ में बात होती है कंटेनर्स की। कंटेनर्स ने जो है वो रेवोल्यूशनाइज कर दिया है हमारी पूरी कंप्यूटर इंडस्ट्री को। सबसे पहला जो रेवोल्यूशन आया था कंप्यूटर इंडस्ट्री में वो जब आया था जब हम लोगों ने वर्चुअल मशीन इन्वेंट करी थी। अगर आप लोगों ने VMware का नाम सुना हो तो VMware इज वेरी फेमस व्हेन इट कम्स टू वर्चुअल मशीन। अब वर्चुअल मशीन क्या है? जब आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो उनके पास डाटा सेंटर होता है। डाटा सेंटर में उनके पास फिजिकल सर्वर्स होते हैं। उन फिजिकल सर्वर्स पे अब एक फिजिकल सर्वर काफी एक्सपेंसिव होता है, उसमें काफी ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं। अगर आप उस पे एक वेब एप्लीकेशन रन कर रहे हैं तो हो सकता है वो सारी रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं करे। तो शुरू में ऐसा ही होता था। तो दैट वाज वेस्ट ऑफ मनी। तो फिर लोगों ने फिगर आउट किया कि अब इसको कैसे हम बेटर यूटिलाइज करें, तो जहाँ वहां से हमारे पास वर्चुअल मशीन का कॉन्सेप्ट आया। वर्चुअल मशीन ने क्या किया कि एक फिजिकल सर्वर पे आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स रन कर सकते हैं। दैट मीन्स आप मल्टीपल अपनी एप्लीकेशन को उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं और आपकी एप्लीकेशन जब उसमें रन हो रही होंगी तो एक फिजिकल सर्वर होगा मगर उसमें आपके 12 डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर एग्जाम्पल रन हो रहे होंगे और 12 डिफरेंट एप्लीकेशन रन हो रही होंगी। तो अब आपने रिसोर्सेज को बेटर यूटिलाइज करना शुरू किया। मगर फिर हमारे पास चैलेंज आया जहाँ पर हमने कंटेनर्स को इन्वेंट किया। वो चैलेंज ये आया कि वो जो वर्चुअल मशीन हैं, जब हम उनको चेंज करते हैं, अपडेट करते हैं, तो दे टेक अ लॉट ऑफ टाइम। 20 मिनट 30 मिनट्स के वर्चुअल मशीन अपडेट हो रही है,
स्टार्ट हो रही है, तो दैट वाज अगेन प्रोडक्टिविटी का लॉस। और दूसरा एक जो चैलेंज है, जो डेवलपर्स थे वो बहुत फास्ट चीज़ों पे काम कर रहे थे अपने लैपटॉप पे काम करने के बाद जब वो डेवऑप्स इंजीनियर को या ऑपरेशन टीम को वो दे रहे थे अपना एप्लीकेशन का कोड बेस, तो वो सर्वर्स पे रन नहीं होता था। तो अब दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया कि भाई मेरी मशीन पे तो चल रहा है, आपके सर्वर पे नहीं चला, आपके सर्वर का मसला है। तो वेस्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी, अगेन बहुत सारे डेज और साइकिल्स इसमें ज़ाया होने लगी कि दोनों जो है वो टीम्स आपस में कॉन्फ्लिक्ट में कि नहीं भाई आपके लैपटॉप पे ये एक्स्ट्रा चीज़ें हम सर्वर पे ये डाल नहीं सकते फॉर सिक्योरिटी। तो अब इस इशू को कैसे सॉल्व किया जाए, यहाँ पर हम लोगों ने फिर कंटेनर्स को इन्वेंट किया। कंटेनर्स क्या होते हैं कि अब जब आपने एक फिजिकल सर्वर था उस पर आपने 12 ऑपरेटिंग सिस्टम रन किए, अब विद इन 12 ऑपरेटिंग सिस्टम भी आप फर्दर अपनी एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर मल्टीपल एप्लीकेशंस रन कर सकते हैं विदाउट एनी लाइब्रेरी कॉन्फ्लिक्ट। लाइब्रेरी कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है कि मैंने एक एप्लीकेशन डेवलप करी, उसको XYZ लाइब्रेरी का वर्जन 1 चाहिए। मैंने एक दूसरी एप्लीकेशन आज से 2 महीने बाद डेवलप करनी है, और वो जब उस टाइम मैं डेवलप करूंगा तो उस वक्त जो XYZ लाइब्रेरी है उसका वर्जन 5 अवेलेबल होगा। एंड XYZ लाइब्रेरी का जो वर्जन 5 एंड वर्जन 1 है दे आर नॉट कंपैटिबल विद ईच अदर, दोनों में कंपैटिबिलिटी नहीं है। तो अब अगर मैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे दोनों एप्लीकेशन रन करने की कोशिश करूंगा तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, उसका नतीजा ये निकलेगा कि मेरी एप्लीकेशन रन नहीं हो पाएंगी, उसमें उनमें कॉन्फ्लिक्ट आएगा, फेलियर्स आएंगे। यहाँ पर हमने कंटेनर्स को इन्वेंट किया। कंटेनर्स क्या करते हैं कि आप अपनी एप्लीकेशन और उसकी डिपेंडेंसीज को इन कंटेनर्स पैकेज कर देते हैं। सबसे पहला बेनिफिट जो हमें कंटेनर से हुआ कि जब आप कंटेनर स्टार्ट करते हैं तो एक कंटेनर जो टिपिकल एवरेज स्टार्ट बूट टाइम है कंटेनर का वो 1 to 2 सेकेंड का। विद इन 1 और 2 सेकंड आपका कंटेनर स्टार्ट एंड फंक्शनल हो जाता है। सिर्फ स्टार्ट की बात नहीं, स्टार्ट तो विद इन सेकंड हो जाता है, बट जो उसके अंदर आपकी एप्लीकेशन है वो भी फंक्शनल हो जाती है विद इन 1 और 2 सेकंड। ये एवरेज कंटेनर का जो है ना एग्जीक्यूशन टाइम है। एज कम्पेयर टू VMs, जो आपकी VMs स्टार्ट होने में 20 मिनट्स लगाती थी, दैट वाज अ ह्यूज डिफरेंस, दैट वाज अ ह्यूज बेनिफिट। तो उस वजह से जब कंटेनर्स को लोगों ने ये कंटेनर्स इन्वेंट हुए और लोगों ने रियलाइज किया कि भाई हमारे पास जो प्रोडक्टिविटी बूस्ट आ रहा है सिर्फ ये स्टार्ट टाइम को अगर हम सामने रखें तो दिस इज ह्यूज। तो लोगों ने कंटेनर्स को अडॉप्ट करना शुरू किया। मगर जो सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ कंटेनर्स को और जहाँ से ये हमारी डेवऑप्स की प्रैक्टिस आई वो ये थी कि जो डेवलपर्स हैं जब वो अपनी डेवलपमेंट मशीन पर डेवलपमेंट कर रहे हैं तो वो वहाँ पर कंटेनर में डेवलपमेंट कर सकते हैं, और वो वहाँ से कंटेनर पैकेज करके ऑपरेशन टीम को देते हैं। ऑपरेशन टीम जाके उसको प्रोडक्शन में एज इट इज रन कर देती है। देयर आर नो कॉन्फ्लिक्ट। एंड दिस आर्ग्यूमेंट जो एक पहले एक दोनों में कॉन्फ्लिक्ट था दोनों टीम्स में कि भाई मेरे लैपटॉप पर तो चल रहा है आपके सर्वर पर नहीं चल रहा, तो ये आपके सर्वर का मसला होगा, वो कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल खत्म हो गया। अब जब कंटेनर पैकेज होता है उस कंटेनर को आप दुनिया के किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चाहे वो किसी भी वर्जन पे चल रहा हो, एज फार एज वहां पर अगर आपके पास कंटेनर का जो डीमन है जो होस्ट करने के लिए एप्लीकेशन होती है, जो आम जबान में अगर आपने डॉकर का नाम सुना हो, डॉकर बहुत फेमस है। मगर सिर्फ डॉकर नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, बट डॉकर इज वेरी फेमस। और डॉकर के आपके बहुत सारे हेल्पफुल आर्टिकल्स भी मिल जाएंगे। तो वो जो चीज़ है वो आपको कंटेनर्स ने दी कि आप उसको दुनिया के किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर चला सकते हैं और जो कॉन्फ्लिक्ट है वो खत्म हो गया। तो हमारी टीम्स की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई और उनका आपस में कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया। और वहां से हमारे पास ये डेवऑप्स का कॉन्सेप्ट आया जब हमने ये दोनों की कॉन्फ्लिक्ट खत्म किया। जो डेवऑप्स का कॉन्सेप्ट है वो डेवलपर्स एंड ऑपरेशंस, उन दोनों को जब हमने मर्ज कर दिया कि दोनों अब साथ काम करते हैं और एक जो फास्टर उनके रिलीज साइकिल है डेवलपर्स की वो रिलीज साइकिल इंक्रीज हो गई। ऑपरेशन जो है वो खुश हैं के बाद जो हमारे डेवलपर्स हमें कोड और एप्लीकेशन दे रहे हैं दैट वर्क सीमलेसली ऑन द सर्वर विद लिटिल बिट मॉडिफिकेशन ऑफ कोर्स बट इट इज ईजियर टू मैनेज। तो दोनों में अब एक जो है ना इंटीग्रेशन हो गई है एंड दे बोथ वर्क टुगेदर। तो यहाँ से हमारे पास डेवऑप्स का कॉन्सेप्ट आया। अब एक चीज होती है कि आपको जब जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आप कैसे सीखें। अगर आप बिगिनर, बहुत सारे पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं, मगर अगर आप पेड कोर्सेज अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप कैसे सीखें। तो आप अगर जैसे डॉकर की जो आप ऑफिशियल साइट पे जाएंगे तो वहाँ पे गेटिंग स्टार्टेड गाइड है, आप वो गाइड फॉलो कर सकते हैं। वो बिल्कुल एक फ्री गाइड होती है, उसकी कोई कॉस्ट नहीं होती और उसमें आपको एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे लर्न कंटेनर्स द हार्ड वे, तो आपको ओपन सोर्स गाइड मिल जाएगी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसी तरीके से लर्न कंटेनर्स द इजी वे, तो आपको उसकी एक ओपन सोर्स गाइड मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और आप उसको लेके लर्न कर सकते हैं। अब आप अपना एक्सपीरियंस कैसे शो करें जॉब्स के लिए, क्योंकि आपने तो अभी लर्न किया है। उसको शो करने का तरीका ये होता है जो आप लर्न करते जा रहे हैं उसको आप एक ब्लॉग क्रिएट करें और उस पर डॉक्यूमेंट करना शुरू करें। जब आप उसको एक ब्लॉग पर डॉक्यूमेंट करना शुरू करेंगे तो जब भी कभी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, और वो होता क्या है कि जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो जो HR, जो रिक्रूटर्स और जो आपका इंटरव्यू कर रहा होता है वो जाके आपको सर्च करते हैं गूगल पे।
ये हमेशा होता है। सही है, तो आपका ब्लॉग आएगा, जब आपका ब्लॉग उनके सामने आएगा तो इंटरव्यू से पहले ही उन्हें पता चल जाएगा कि इस भाई ने वाकई काम किया है। ऐसा नहीं है कि इसने सीवी में कुछ भी लिख दिया। और वो काम करने के लिए आपको किसी को पैसे देने की भी जरूरत नहीं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं पेड ट्यूटोरियल, तो देर आर वेरी गुड पेड ट्यूटोरियल्स एज वेल, तो आप बोलें। मगर अगर इनकेस आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो ऑफिशियल गाइड पे जाएं, गूगल पे जाके लिखें ये कीवर्ड मैं आपको बता रहा हूँ: लर्न कंटेनर्स हार्ड वे, लर्न डॉकर हार्ड वे, लर्न कंटेनर्स इजी वे। आपको इन सब की ओपन सोर्स गाइड मिल जाएंगी। इसी तरीके से कंटेनर्स में हमारे पास डॉकर के अलावा एक क्यूबरनेटीज है। क्यूबरनेटीज आजकल बहुत जो है ना, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा हाई है। अगर आप क्यूबरनेटीज लर्न कर लेते हैं और आप उसमें मास्टर हो जाते हैं, तो उसकी जॉब तो आपको बहुत इजीली मिल जाएगी। लर्न क्यूबरनेटीज हार्ड वे एंड लर्न क्यूबरनेटीज इजी वे इज अ वेरी फेमस ट्यूटोरियल अवेलेबल, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सही है। अब एक हमारे पास ये होता है, चैलेंज आता है कि ये सारी चीजों के लिए आपको लिनक्स आनी चाहिए। यस, थोड़ी बहुत लिनक्स आनी चाहिए, बट उस पे आप ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें लिनक्स सीखने पे, बिकॉज अब लिनक्स हर जगह चल तो रही है, मगर लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की एज सच डिमांड नहीं है। जो जॉब्स आती हैं वो डेवऑप्स इंजीनियर्स की आती हैं कि आपको लेटेस्ट टूल्स यूज करने आते हैं या नहीं आते, आपको डॉकर कंटेनर्स का पता है या नहीं पता है, आपको सिक्योरिटी आती है या नहीं आती है। इसी तरह जब हम डेवऑप्स की बात करते हैं, और ये डेवऑप्स का कॉन्सेप्ट हमारे पास आ गया, आप जब क्लाउड की बात करते हैं, डेवऑप्स इन क्लाउड, तो एडब्ल्यूएस इज द क्लाउड लीडर। एडब्ल्यूएस का अगर आप अपना फ्री अकाउंट बनाते हैं, तो एडब्ल्यूएस आपको फ्री ट्यूटोरियल्स देता है ये सारी सर्विसेज को ट्राई करने के लिए, और उनकी कोई कॉस्ट भी नहीं होती। वो आपको बताते हैं कि जब आप इस फ्री ट्यूटोरियल को एडब्ल्यूएस पे ट्राई करेंगे, तो ये फ्री रिसोर्सेज को आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी लर्निंग के लिए। तो वहां पर आपको कोई कॉस्ट नहीं देनी पड़ती, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप जाके वो ट्यूटोरियल्स ट्राई कर सकते हैं। एंड अगेन, जब आप वो ट्राई करें, सिर्फ उन्हें ट्राई नहीं करें, आप उन्हें डॉक्यूमेंट भी करें। जब आप उन्हें डॉक्यूमेंट करेंगे, एक तो आपकी लर्निंग उससे इंक्रीज होगी, और दूसरा आप एक अथॉरिटी स्टैब्लिश कर रहे हैं कि हाँ भाई, मैंने ये काम किया हुआ है, मुझे ये सारी चीजें आती हैं। सही है। तो इस वजह से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डॉक्यूमेंट करें, चाहे वो आप ब्लॉग पे डॉक्यूमेंट करें, चाहे आप अपना एक यूट्यूब चैनल क्रिएट कर लें और वहां पर आप उसकी वीडियोस बनाकर डालते रहें साथ साथ अपनी लर्निंग की। तो उससे होगा ये कि आप जो है वो एक एक्सपर्ट बनते जाएंगे, फॉर द टाइम टू टाइम आप उसमें अपनी चीजें पोस्ट करते जाएंगे। और जब भी कोई रिक्रूटर, एचआर, जहाँ पे आपने सीवी भेजी और वो आपको सर्च करेगा गूगल पर, तो उनके पास आपकी वो सारी कंटेंट आएगा। तो आप कोई अननोन बंदे नहीं रहेंगे फिर इंडस्ट्री में, आप एक नोन बंदे बन जाएंगे। और अगर यूट्यूब पे आपको कुछ लोग फॉलो करना शुरू कर दें क्योंकि आपके जो ट्यूटोरियल्स हैं वो अच्छे हैं और आप उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करें, तो फिर आप ऑटोमेटिकली फेमस भी हो जाएंगे और लोग आपको जाने लगेंगे, तो आपको बहुत इजीली जॉब मिल जाएंगे। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप इस बात से परेशान नहीं हो कि मैं एक्सपीरियंस कैसे गेन करूं। एक्सपीरियंस गेन करने का आसान तरीका, आज की तारीख में टेक्नोलॉजी सबके पास अवेलेबल है और सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप एडब्ल्यूएस पे फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट बना सकते हैं। एडब्ल्यूएस ने अभी जो है अपनी जो टॉप की सर्टिफिकेशन, टॉप की नहीं, जो बिगिनर सर्टिफिकेशन है, सॉरी, वो फ्री कर दिया उनके ट्यूटोरियल कंप्लीटली। तो सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट एंड क्लाउड प्रैक्टिशनर, ये दो सर्टिफिकेशन कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं आपके लिए, ऑफिशियली फ्रॉम एडब्ल्यूएस। तो अब अगर कोई आज के टाइम में बोलता है कि मैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कोडिंग कर सकता, तो ये जस्ट साउंड लाइक एन एक्सक्यूज। क्योंकि हमें आज की तारीख में इस तरह का कोई एक्सक्यूज नहीं है, क्योंकि जो जो कंटेंट इस वक्त फ्रीली अवेलेबल है, दैट इज मोर देन इनफ कि आप जो है ये सारी नई टेक्नोलॉजीज को लर्न कर सकें। अगर आपको नहीं पता कि आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, तो एक बहुत फेमस, अगेन गूगल पे जाएं, आप टाइप करें डेवॉप्स रोड मैप, या सिर्फ आप टाइप करें roadmap.sh, तो वहां पर आपको डेवॉप्स का रोड मैप मिल जाएगा, जो कि एक और पाकिस्तानी डेवलपर है, उन्होंने क्रिएट किया है। एंड इट इज वेरी फेमस एंड इट इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। वो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड देगा कि आपको डेवॉप्स में क्या क्या चीजें लर्न करनी चाहिए। आप चाहें तो सारी चीजें लर्न करें, आप चाहें तो कुछ चीजें लर्न करें, और आप चाहें तो सिर्फ कुछ चीजों की इंफॉर्मेशन गेन करने, उसमें आपको मास्टर होने की जरूरत नहीं है, आप विद टाइम मास्टर हो जाएंगे। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो जो आप करते जा रहे हैं, आप उसे डॉक्यूमेंट करते जाएं। आप उसे उर्दू में भी डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, जो कि बाकी पाकिस्तानियों को हेल्प करेगा। आप उसे इंग्लिश में भी डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, जो कि आपको हेल्प करेगा। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं, तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। और अगेन सेम थिंग, आप इंडस्ट्री में एक एक्सपर्ट बनना शुरू हो जाएंगे, लोग आपके पास फिर क्वेश्चन करने आएंगे, लोग आपको रिकग्नाइज करना शुरू कर देंगे, लोग आपको रेफर करना शुरू कर देंगे। जब कोई किसी से पूछेगा कि यार मैं एक डेवऑप्स इंजीनियर ढूंढ रहा हूँ जिसने इन टेक्नोलॉजीज पे काम किया हुआ है, तो वो बताएंगे कि यार मैं एक बंदे को फॉलो करता हूँ या मैं उनका ब्लॉग रीड करता हूँ और उन्होंने इन इन टेक्नोलॉजीज पे काम किया हुआ है। तो ऑटोमेटिकली आपके पास अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी। फिर एक टाइम आएगा कि आप जॉब के लिए अप्लाई नहीं करोगे, बल्कि आपके पास लोग आ रहे होंगे कि हमारे पास ये पोजीशन अवेलेबल है, आप ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो इसलिए जो भी आप लर्निंग करें, आप उसको डॉक्यूमेंट करना शुरू करें। तो ये होगी डेवऑप्स की बात। डेवऑप्स के बाद अब जब हम बात करते हैं डेव सेक ऑप्स की,
DevSecOps क्या चीज़ है? DevOps में एक मेन कॉन्सेप्ट है CI/CD पाइपलाइन का। CI/CD पाइपलाइन क्या होती है कि डेवलपर्स हैं, उन्होंने एप्लीकेशन पे काम किया और वो फिर उसको पुश करते हैं कि अब ये कोड रेडी है, इसको हमें सर्वर पे डिप्लॉय करना है। बिफोर वो सर्वर पे डिप्लॉय होता है, वो टेस्टिंग के फेज से गुजरता है, टेस्ट होता है। अगर डॉकर बेस्ड डिप्लॉयमेंट है तो डॉकर की इमेजेस बिल्ड होते हैं। ये सारे थोड़े से, अगर आपको टेक्निकल साउंड हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप ज़्यादा उसमें परेशान नहीं हो कि ये क्या टेक्निकल बातें हो रही हैं। ये एक कॉन्सेप्ट है डिप्लॉयमेंट का, बस इतना समझना काफ़ी है। डॉकर इमेजेस बिल्ड होने के बाद फिर वो पुश होती हैं एक रिपॉजिटरी में और वहाँ से वो सर्वर पर डिप्लॉय होती हैं। इसमें अब जो हमारे पास चीज़ मिसिंग थी अर्लियर, जब डेवऑप्स को हमने इंटीग्रेट किया डेवलपर्स एंड ऑपरेशंस को, वो सिक्योरिटी थी। हमने कहा यार ये जो डेवलपर्स काम कर रहे हैं अक्सर इनके कोड में कुछ सिक्योरिटी के इश्यूज होते हैं और वो चीज़ प्रोडक्शन पर चली जाती है। हम टेस्ट तो कर लेते हैं, फंक्शनैलिटी टेस्ट हो जाती है, मगर सिक्योरिटी के इश्यूज प्रोडक्शन में आ जाते हैं। क्योंकि जब हम उसको डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में, क्यू एनवायरनमेंट में करते हैं तो वहाँ पर वो सिक्योरिटी के इश्यूज हाईलाइट नहीं होते। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एवरी टाइम कि आप वो सारी चीज़ों को टेस्ट करें। अगर आप एवरी टाइम सारी चीज़ों को मैनुअली टेस्ट करेंगे तो अगेन जो बेनिफिट हमें डेवऑप्स का हुआ था कि फास्टर रिलीज टू मार्केट, के मार्केट में हम न्यू फीचर्स को बहुत तेजी के साथ रिलीज कर पा रहे थे, वो हमारा सारा बेनिफिट लूज हो जाएगा। तो अब हम इसको कैसे ओवरकम करें? तो फिर इंडस्ट्री के जो लीडर्स हैं उन्होंने इस चीज़ को अडॉप्ट किया कि अब हम सिक्योरिटी की टीम को भी डेवऑप्स के साथ इंटीग्रेट कर देते हैं, कि जो डेवलपर्स एंड ऑपरेशंस और सिक्योरिटी की टीम है ये तीनों आपस में मिलकर काम करते हैं। तो अब होता क्या है, डेवसेकऑप्स क्या चीज़ है? CI/CD पाइपलाइन आपकी वही है कि ये सारे फेज कंप्लीट होंगे। जब कोई डेवलपर कोड पुश करेगा तो वो पहले बिल्ड में जाएगा, यूनिट टेस्टिंग होगी, फिर डॉकर इमेजेस बिल्ड होंगी और प्रोडक्शन में जाएगा। मगर बीच में हमने एक चीज़ इंट्रोड्यूस कर दी, सिक्योरिटी टेस्टिंग। और सिक्योरिटी टीम को हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि हम मैनुअली टेस्टिंग तो नहीं कर सकते, आपने अपने सारे टेस्ट जो आप मैनुअली करते हैं आप उनको ऑटोमेट करें और उसको हम पाइपलाइन का पार्ट बनाएंगे। और अगर पाइपलाइन में वो टेस्ट फेल होते हैं तो ये सिक्योरिटी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनको इवेल्युएट करेगी और डेवलपर्स को फीडबैक देगी कि आपके जो कोड आपने पुश किया उसमें सिक्योरिटी के ये मसले आ रहे हैं, काइंडली आप इनको फिक्स करें। तो इससे हमें बेनिफिट क्या हुआ कि हमारा जो फीडबैक का लूप है वो छोटा हो गया। अगर आप ये अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऊपर एक डेवऑप्स का लूप बना हुआ है, इसको कहते हैं डेवऑप्स फीडबैक लूप। कि डेवलपर्स ने कोड पे पुश किया, वो बिल्ड टेस्ट रिलीज होके अगर उसमें कुछ एरर्स थे तो वो वापस डेवलपर्स के पास उनका फीडबैक आया। ये फीडबैक लूप सिक्योरिटी का हमारा शॉर्टर हो गया कि जब भी सिक्योरिटी के मसले आते हैं वो फॉरन डेवलपर्स के पास अलर्ट आ जाता है, ऑटोमेटेड अलर्ट आ जाते हैं। अगर वो स्लैक पर हैं, स्लैक अलर्ट आ जाते हैं, ईमेल अलर्ट आ जाते हैं। डिपेंडिंग ऑन द क्रिटिकलिटी उनके पास SMS एंड कॉल्स भी आ सकती हैं। ये सारी चीज़ें अब ऑटोमेट हो चुकी हैं। तो जब ये सारी ऑटोमेशन हमने करी तो हमने इसको नाम दिया डेवसेकऑप्स का। तो कॉन्सेप्ट वही है डेवऑप्स का, मगर हमने उसमें सिक्योरिटी टीम्स को भी पार्ट बना लिया, सिक्योरिटी को भी हमने डेवऑप्स पाइपलाइन का पार्ट बना लिया और उसको ऑटोमेट कर दिया, ताकि बिफोर जो डेवलपर्स हमारे कोड पुश कर रहे हैं वो प्रोडक्शन में जाए और हमारी साइट में कोई सिक्योरिटी के इंसिडेंट्स हो और हमारा डाटा कॉम्प्रोमाइज हो, उससे पहले ही हमने डेवलपर्स को ये बात नोटिफाई करवाना शुरू कर दी कि आपके कोड में ये सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, काइंडली आप इनको फिक्स करें। और डेवलपर्स ने उन इश्यूज को फिक्स करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से डेवसेकऑप्स की वजह से हमारी जो एप्लीकेशंस अब डिप्लॉय होती हैं प्रोडक्शन में, दे आर फार मोर सिक्योर देन बिफोर। तो ये हमारा पास डेवऑप्स डेवसेकऑप्स का कॉन्सेप्ट है। अब इसमें जो एक चीज़ है वो इसको कहते हैं शिफ्ट लेफ्ट। आप बहुत सारी जगह पर देखेंगे शिफ्ट लेफ्ट की बात हो रही है। शिफ्ट लेफ्ट क्या होता है कि सिक्योरिटी इज एवरीबॉडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हमने डेवलपर्स को सिक्योरिटी को लेफ्ट पे शिफ्ट कर दिया, डेवलपर्स को भी हमने सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल बना दिया। नाउ दे आर प्लेइंग अ पार्ट इन सिक्योरिटी। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवसेकऑप्स कि आप सिक्योरिटी जो है वो सिर्फ सिक्योरिटी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सिक्योरिटी टीम पॉलिसीज तो लिखती है, मगर जो कोड को सिक्योर कर रहे हैं वो हमारे डेवलपर्स भी उसको सिक्योर कर रहे हैं। वो पार्ट बन गए हैं अब हमारे डेवसेकऑप्स का। जब भी वो कोई कोड लिखते हैं तो दे हैव इन माइंड कि यार मैं ये कोड अगर मैं पुश करने लगा हूँ तो जब मैं ये कोड पुश करूंगा और ये आगे पाइपलाइन में जाएगा तो ये फेल होगा। जब ये फेल होगा तो मेरे पास नोटिफिकेशन आएगी। तो वो अब कोड लिखते हुए भी इस चीज को अपने सामने रखते हैं कि मैं कोड ऐसा लिखूं कि कोड सिक्योर हो। जब कोड सिक्योर होता है तो पाइपलाइन उनकी सक्सेसफुल हो जाती है, तो फिर वो उनकी केपीआईज के अगेंस्ट भी काउंट होता है कि कितनी पाइपलाइन फेल हुई और कितनी पाइपलाइन सक्सेसफुल थी। क्योंकि ये डेवऑप्स की केपीआई, जब आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाके काम करेंगे तो ये सारी चीजें वहां पर मेजर हो रही होती हैं कि डेवऑप्स की केपीआईज कितनी हमने फुलफिल करी हैं, कितनी अचीव करी हैं, कितनी मिस करी हैं। और फिर टीम्स उस पर पोस्टमार्टम करते हैं। जैसे अभी पीयूष जिक्र कर रहे थे एसआरई का, कि एसआरई की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सर्वर्स को अप एंड रनिंग रखना है, मगर जब कोई उसमें इश्यूज आते हैं तो उन इश्यूज को हैंडल करने के बाद वो उसका पोस्टमार्टम करते हैं कि ये इशू आया क्यों, इसको हम फिक्स कैसे करेंगे। इसी तरह जो डेवऑप्स टीम्स हैं जब उन अपनी केपीआईज को एनालाइज करते हैं तो वो फिर उसका जो है वो पोस्टमार्टम करते हैं कि हमारे पास ये इशू आया क्यों।
इसको हम किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं कि ये जो हमारा एक फ्रिक्शन है बिटवीन हमारा जो कोड पुश होता है और जो प्रोडक्शन में डिप्लॉय होता है, उसको हम रिड्यूस कर सकें और ये एक चीज़ हम इसको फास्टर कर सकें। तो ये सारी चीज़ों को हमने फिर अगेन ऑटोमेट कर दिया। अब ऑटोमेटेड हमारे पास केपीआईज हैं, ऑटोमेटेड नोटिफिकेशन हैं। तो अब डेवलपर्स भी दे आर माइंडफुल। जब भी वो कोड लिखते हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोड लिखकर, वही बात है कि पहले जो एक कॉन्फ्लिक्ट था टीम्स में कि मेरे लैपटॉप पर तो चल रहा है, आपके सर्वर पे प्रॉब्लम है। अब वो चीज़ खत्म हो चुकी है। अब वो डॉकर कंटेनर्स को पुश करते हैं, वो डॉकर कंटेनर्स को सिक्योरिटी टीम्स अपने सिक्योरिटी इन्वायरमेंट में रन करते हैं, उनको टेस्ट करते हैं, सिक्योरिटी टेस्टिंग ऑटोमेटिकली, और डेवलपर्स को फीडबैक देते हैं। तो वो ये भी नहीं बोल सकते कि ये सिक्योरिटी इश्यूज आपके एनवायरनमेंट की वजह से आए, क्योंकि वो सिर्फ डॉकर कंटेनर को टेस्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से जब वो ऑपरेशन में जाता है, जो हमारी ऑपरेशन टीम है, जब उसको डिप्लॉय करती है सर्वर पर और उसकी सर्वर पे उसकी टेस्टिंग करती है कि फंक्शनैलिटी हमारी सही है, सारी चीज़ें फंक्शनल हैं, तो वहाँ पर अगर कोई इश्यूज आते हैं तो वो अगेन डेवलपर्स को नोटिफाई करते हैं कि आपने ये मिस्टेक करी अपनी कोड में और जो है इसको आप फिक्स करने चाहेंगे। तो इस तरीके से हमारी एक डेव साइकिल का पूरा एक लूप जो है वो कंप्लीट हो जाता है और डेवलपर्स के पास एक अर्ली फीडबैक आ जाता है, जिससे अगेन जो बेनिफिट है वो एक फास्टर रिलीज टू मार्केट, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज। जब इस आप कॉम्पिटिटिव मार्केट में आप फास्टर रिलीजेस करते हैं तो ऑब्वियसली यू हैव अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर योर कॉम्पिटिटर। So I think that was it for my presentation. ओके। हमीद, एक बेसिक क्वेश्चन है जो कि कमेंट्स में भी ऑडियंस को हमारी, क्योंकि फ्रेश ग्रेड्स हैं, अंडर ग्रेड्स, उनको भी क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस। एक डेवऑप्स इंजीनियर को डेवसेकऑप्स के बारे में, क्लाउड के बारे में पता होना जरूरी है, या वो सिर्फ डेवऑप्स के बेसिक्स जान के भी आगे जा सकता है? देखिए, अब जिस तरीके से टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, तो डेव ऑप्स अगर आपको पता है तो डेव सेक ऑप्स के आपको सिर्फ अगर बेसिक भी पता है तो आप आगे जा सकते हैं। आपको उसमें कमांड हासिल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कमांड हासिल करने के लिए दैट मीन्स कि आप सिक्योरिटी की फील्ड में आ गए। अब आप सिक्योरिटी में जा रहे हैं जब आप डेव सेक ऑप्स की बात कर रहे हैं। आप वो जो सिक्योरिटी की पॉलिसीज हैं, आप वो रिस्पॉन्सिबल हैं उसको लिखने के। मगर अगर आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ उस हद तक रहूँ जहाँ पर मैं पाइपलाइंस डिजाइन कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास डेवऑप्स में बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। एडब्ल्यूएस है, एडब्ल्यूएस की पाइपलाइंस अवेलेबल हैं, गिटहब है, गिटलैब है, इन सबकी पाइपलाइंस अवेलेबल हैं और इनके सबके डिफरेंट फॉर्मेट हैं। तो वो प्रॉपर पाइपलाइंस बनाने के लिए आपको उन पे कमांड हासिल होना ज़रूरी है, राइट? तो जब आप लर्न करते हैं तो आप किसी एक टूल पे लर्न करेंगे, उसमें कमांड हासिल करेंगे, बाकी सारे टूल्स की आप एक नो हाउ कलेक्ट कर लेते हैं ताकि अगर कभी काम आता है तो आप उसको कर सकें। जैसे अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से एग्जाम्पल दूँ, हम लोग जो हैं वो एक सर्विसेज कंपनी है। हम डिफरेंट कस्टमर्स के साथ काम करते हैं। हर कस्टमर जो है वो एक डिफरेंट पाइपलाइन यूज़ कर रहा है। अब मैं कस्टमर को जाके ये नहीं बोल सकता कि मैं तो सिर्फ एडब्ल्यूएस की कोड पाइपलाइन करूंगा, मुझे गिटहब की पाइपलाइन नहीं आती, मुझे गिटलैब की पाइपलाइन नहीं आती। तो हमारी टीम में जो हमारे टीम मेंबर्स हैं उनके पास गिटहब का एक्सपीरियंस है, दे आर एक्सपर्ट इन गिटहब। बट मुझे नो हाउ है, मैं कस्टमर से बात कर सकता हूँ, उनकी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ और फिर जो हमारा एक्सपर्ट है वो उसको टेक केयर करता है, वो उसको फिक्स करता है। तो इस तरीके से आप एक्सपर्ट तो एक चीज में होंगे, मगर क्योंकि डेवऑप्स में ये सारे टूल्स यूज होते हैं तो नो हाउ होना जरूरी है। आप पढ़ें, उसको प्रैक्टिस करें तो आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी, आपको नो हाउ होगी। Okay, so since you are a cloud expert also, so what are the key considerations when choosing a cloud provider for DevOps practices? जो की कंसिडरेशन है वो जो मैं रिकमेंड करता हूँ यूजली लोगों को कि मार्केट में आप डिमांड देखें कितनी ज़्यादा है। जो सबसे लीडिंग क्लाउड प्रोवाइडर है उसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है, राइट? जो लीस्ट यानी कि जो सबसे लोअर एंड पे उसकी डिमांड कम है। तो अगर आप लोअर एंड को जाके सीखेंगे तो आपको फिर जॉब मिलना मुश्किल है, क्योंकि उसकी डिमांड मार्केट में कम है। जो लीडर हैं माइक्रो लाइक फॉर एग्जांपल मार्केट में, आप उनको फॉलो करें। जैसे एडब्ल्यूएस है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट है, फिर गूगल है, ओरेकल है। ये सारे लीडर्स हैं इस वक्त क्लाउड मार्केट में। तो अगर आप इनकी आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं, आप इनके बारे में लर्न करते हैं, तो ऑब्वियसली उसमें आपको जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आप जैसे फ्रेश ग्रेजुएट हैं तो ऑब्वियसली मुझे पता है जब फ्रेश ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी से पास आउट होते हैं तो उनके दिमाग में एक ही चीज़ होती है, मुझे फॉरन जॉब चाहिए, अगले दिन उन्हें जॉब चाहिए होती है। जब मैं भी ग्रेजुएट हुआ था तो मेरे जहन में भी यही था, मेरा भाई हुआ तो उसकी भी यही टेंशन थी। एंड ये एक कॉमन चीज़ है। तो उसमें आप जो लीडिंग क्लाउड प्रोवाइडर हैं आप उनको लर्न करें, आपको इजीली जॉब मिल जाएगी। Okay, so how does cloud infrastructure enable automated scaling and elasticity? इसमें कोई होता है थोड़ा इसका रोल? जी बिल्कुल। अब जैसे अगर आप डेवऑप्स है ना और डेवऑप्स इंजीनियर हैं और आपने एक इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय करना है, तो अगर मैं एडब्ल्यूएस की बात करूं तो एडब्ल्यूएस में हमारे पास बहुत सारी सर्विसेज हैं। लाइक ऑटो स्केलिंग के लिए एडब्ल्यूएस की एक ऑटो स्केलिंग की सर्विस है। जब आप अपने सर्वर डिप्लॉय करते हैं तो आप उसके साथ वो ऑटो स्केलिंग सर्विस कॉन्फ़िगर करते हैं और उस सर्विस में आप ये कॉन्फ़िगर करते हैं कि आप सीपीयू को मॉनिटर करें। अगर इन सर्वर्स का सीपीयू जो है वो 60% से ज़्यादा यूटिलाइज हो जाए
तो आप एक न्यू सर्वर ऐड कर दें पूल में, तो जैसे ही सर्वर का यूटिलाइजेशन 60% जाता है, एक न्यू सर्विस ऐड हो जाती है, तो ये आपकी ऑटो स्केलिंग हो गई। तो क्लाउड में ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लाउड नाम ही इलास्टिसिटी का है। तो जब आप क्लाउड में काम करें तो सिर्फ सर्वर बनाना इज़ नॉट इनफ। आप क्लाउड के कॉन्सेप्ट को समझें, सर्वरलेस का कॉन्सेप्ट समझें, ऑटो स्केलिंग का कॉन्सेप्ट समझें, लोड बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट समझें। ये बेसिक्स हैं क्लाउड के। जो मैंने सबसे पहला अपना मैंने प्रेजेंटेशन दी थी क्लाउड पे, वो मैंने यही दी थी कि लोड बैलेंसिंग और 3 टियर आर्किटेक्चर। 3 टियर आर्किटेक्चर एक कीवर्ड है, आप उसको अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि 3 टियर आर्किटेक्चर क्या होता है। ऑटो स्केलिंग, लोड बैलेंसिंग एंड 3 टियर आर्किटेक्चर। तो ये बहुत बेसिक्स हैं, ये हर किसी को पता होना चाहिए अगर आप क्लाउड में जा रहे हैं या डेवलप इंजीनियर बनना चाह रहे हैं। Okay, so since you are the most experienced speaker we have in the panel, so please lead us through your journey ताकि young generation को भी थोड़ा पता चले आपके बारे में, companies के बारे में, सब कुछ, please. अच्छा, ओके। यू आर पुटिंग मी इन अ वेरी डिफिकल्ट, तो मैं अपनी जर्नी शेयर करता हूँ बिल्कुल। We have 5 minutes left, so do that. ओके, श्योर। तो मैंने अपना जो करियर स्टार्ट किया, मैं जब यूनिवर्सिटी में था, तो अगेन मुझे क्यूरियोसिटी थी कि यार ये कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। क्योंकि व्हेन आई सॉ द कंप्यूटर, पहली दफ़ा जब मैंने कंप्यूटर को देखा था ना, तो उससे पहले जब मैंने कंप्यूटर नहीं देखा था तो मुझे डॉक्टर या इंजीनियर बनना था या आर्मी में जाना था। मगर जिस दिन मैंने कंप्यूटर पहली दफ़ा देखा था अपनी लाइफ में, तो उस दिन मैंने डिसाइड किया था कि मैंने कंप्यूटर इंजीनियर बनने की कोशिश नहीं की। अगर मैं किसी और फील्ड में भी जाऊँगा तो मैं वहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियर होऊँगा। अगर मैं मेडिकल की फील्ड में जाऊँगा तो मैं एज़ अ कंप्यूटर स्पेशलिस्ट जाऊँगा। अगर मैं आर्मी में जाऊँगा तो एज़ अ कंप्यूटर स्पेशलिस्ट जाऊँगा। मुझे कंप्यूटर में ही कुछ करना है, क्योंकि लाइक इट वाज जस्ट माय क्यूरियोसिटी कि भाई ये सारी चीज़ें कैसे चल रही हैं। तो मैंने सबसे पहले लर्न करना शुरू किया, एक पुराना कंप्यूटर मैंने परचेज़ किया, उस पे मैंने ट्राई करना शुरू किया। फिर मैंने देखा कि पाकिस्तान में कौन लोग काम कर रहे हैं। उस ज़माने में बहुत कम लोग थे, 2003-4 की बात है, बहुत कम लोग उस टाइम कंप्यूटर पे काम करते थे। तो मैंने सर्च करना शुरू किया कि यार ये किन चीज़ों पे काम करें, तो मैं पता चला भाई विंडोज़ है, विंडोज़ में सी प्लस प्लस का एक टर्बो सी के नाम से आईडी आता था, उसमें लोग प्रोग्रामिंग करते थे। अच्छा, फिर मैंने देखा कि ये तो सारी चीज़ें हो रही हैं मगर मुझे मज़ा नहीं आया। मैंने कहा यार और भी कुछ बताओ। तो फिर एक दफ़ा बुध को डेली वीकली जो बुध है ना, उसमें एक मैगज़ीन आता था, उसमें आर्टिकल आते थे, तो उसमें हैकिंग का आर्टिकल आया। मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है, ये तो मुझे नहीं पता। तो मैंने उसके बारे में सर्च किया, जब मैंने उसके बारे में सर्च किया तो मुझे एक आर्टिकल मिला, हाउ टू बिकम अ हैकर। वो हाउ टू बिकम अ हैकर वो नहीं है कि मैं जाके लोगों के अकाउंट या कंप्यूटर हैक करूँ। वो हाउ टू बिकम अ हैकर है कि हैकिंग इज़ कॉन्सेप्ट, सही है? बहुत सारे लोग समझते हैं कि मैं जाके किसी सर्वर हैक हैक करूँ या नहीं। हैकर माइंडसेट जो है वो ये होता है कि अगर एक चीज़ हम उसको ABCD EY, जैसे हमारी जो ABCD है वो इस तरीके से हम करते आ रहे हैं, तो देयर शुड बी अ बेटर वे एज़ वेल, देयर शुड बी अ डिफरेंट वे एज़ वेल। जितनी भी इनोवेशन अगर आप ये कंप्यूटिंग इंडस्ट्री में देख रहे हैं ना, ये सारे हैकर्स ने करी। तो वो किस तरीके से उन्होंने करी है कि दे ऑलवेज फाइंड अनदर वे, कि यार कोई और तरीका होगा इसको करने का। तो जो सिक्योरिटी ब्रीचेस होते हैं वो भी हैकर्स की वजह से होते हैं, और जो सिक्योरिटी फिक्सेस होते हैं वो भी हैकर की वजह से होते हैं। तो मैंने कहा मुझे हैकिंग लर्न करनी है। जब मैं हैकिंग को डिस्कवर किया तो फिर मुझे वहाँ से पाइथन एंड लिनक्स मिली। तो मैं फिर लिनक्स पाकिस्तान, एक तारिक साहब होते थे, उन्होंने मुझे इनकरेज किया कि आप जाके लिनक्स की सर्टिफिकेशन करें। मैंने जाके स्टडी किया, मैंने लिनक्स की सर्टिफिकेशन करी और मैं पहली अटेम्प्ट में पास हो गया। तो उन्होंने फिर मुझे पुश किया कि भाई आप, क्योंकि आपको लिनक्स अब इतनी अच्छी आ गई, तो अब आप इसमें कोई प्रैक्टिकल जॉब वगैरह ढूंढें। तो मैं यूनिवर्सिटी में था मेरी, मैंने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया, तो उन्होंने मुझे बोला कि हम इंटर्नशिप नहीं देंगे, लेकिन हम आपको पार्ट टाइम जॉब देंगे। वो पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट होते होते फुल टाइम जॉब में कन्वर्ट हो गई। और फिर जो है मैंने वो फुल टाइम जॉब अपनी तकरीबन 2004-5 में व्हाइल आई वाज इन यूनिवर्सिटी मैंने स्टार्ट कर दी थी। फिर एक कैनेडियन कंपनी थी, मैंने उनके लिए पाकिस्तान से ही काम करना स्टार्ट किया। वो पाकिस्तान में पाकिस्तानी डेवलपर्स को हायर करते थे, तो मैं वहाँ पे एज अ लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर था। फिर मैं फोरम्स पे बहुत एक्टिव था, जैसे मैंने अभी मशवरा दिया ना कि आप लोग ब्लॉग्स लिखें, मैं ये सारी चीज़ें बहुत करता था। मैं फोरम्स पे जाता था, लोगों की हेल्प करता था। तो वहाँ से मैं फिर सिस्को वालों के साथ कनेक्ट हुआ। सिस्को ने मुझे अप्रोच किया कि ये जो आप एपीआईज़ पे काम कर रहे हैं, हमें इस पे हेल्प चाहिए, तो आप दुबई में आके हमें जॉइन कर दें। तो उनसे वो डिस्कशन स्टार्ट हुई, वो चलती रही तकरीबन 1 साल, वो सारी चीज़ें बैक एंड फोर्थ चलती रहीं, इंटरव्यूज़ होते रहे। फिर उन्होंने मुझे पाकिस्तान से ही डायरेक्ट हायर करके मुझे दुबई बुला लिया। फिर मैं सिस्को में तकरीबन 6-7 साल मैंने सिस्को में जॉब करी। फिर वहीं से 2009 में मैंने एडब्ल्यूएस डिस्कवर किया था। तो जब मैंने अपना पहला एडब्ल्यूएस अकाउंट बनाया था, तो अगेन आई फॉल इन लव विद एडब्ल्यूएस। जो सारी ऑटोमेशन और पावर मेरे हाथ में आई एडब्ल्यूएस पे साइन अप करते ही, कि मैं जाके विद इन मिनट्स सर्वर्स क्रिएट कर रहा हूँ और ऑटोमेट कर रहा हूँ और उनको टर्मिनेट कर रहा हूँ। तो आई स्टार्टेड एंजॉयिंग दैट। तो मैंने कहा बस मुझे क्लाउड में ही कुछ करना है। फिर उसी तरीके से सिक्योरिटी का मेरा माइंडसेट पहले से ही था। तो क्लाउड क्लाउड सिक्योरिटी ये सारी चीज़ें करते करते फिर मैंने अपनी जो है ये कंसल्टिंग कंपनी स्टार्ट करी, क्योंकि मेरे मुझे जो मेरे कस्टमर्स हैं
जिनके साथ मैं काम करता था, इवन सिस्को में भी, और लाइक लोग मुझे अप्रोच करते थे क्योंकि मैं फोरम्स पे बहुत एक्टिव था। तो वहीं से मेरे पास बहुत सारी लीड्स आती थी, लोग आते थे कि हमें ये हेल्प चाहिए, तो मैं उनकी हेल्प करता था, वो मुझे पैसे देते थे। तो उन्होंने बोला कि यार हम मार्केट में जाते हैं, वेंडर्स के साथ काम करते हैं, वो सपोर्ट और वो चीज़ नहीं मिलती जो तुम एक एक इंडिविजुअल मुझे देते हो। मगर अब प्रॉब्लम ये है कि तुम इतने ज़्यादा बिजी हो गए, तुम्हारे पास इतने सारे लोग आ गए, तो उसको किसी तरीके से स्केल करो। तो दिस इज़ वेयर आई स्टार्टेड माई कंपनी, कि अच्छा जो काम मैं कर रहा हूँ मैं उसको स्केल करता हूँ। अब हमारे पास पूरी टीम है, 16-17 लोगों की हमारी टीम है, जो कि हम कस्टमर्स को वही सर्विसेज और वही सारी चीज़ें प्रोवाइड करें जहाँ पे क्लाउड एंड क्लाउड सिक्योरिटी है। तो अब हम दुबई बेस्ड हमारी कंपनी है, हमारे पास पाकिस्तान में भी डेवलपर्स हैं, हमारे पास इंडिया में भी डेवलपर्स हैं, फिलीपींस में डेवलपर्स नहीं, लाइक डेवऑप्स इंजीनियर्स हैं, एंड फिलीपींस में भी हमारी टीम है। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड हम जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, 24/7 मैनेज सर्विसेज, डेवऑप्स, AWS, क्लाउड सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करें। तो ये ओके, मेरी छोटी सी जर्नी थी। छोटी नहीं, बहुत बड़ी जर्नी है, और आई थिंक लोगों के लिए काफ़ी इंस्पिरेशनल भी है जिस तरह से आपने ग्रो किया ओवर द इयर्स, एंड देन लास्ट में लोगों का ड्रीम होता है कि अपनी कंपनी सेटअप करें, सो आपने वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अचीव भी किया है। सो लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही एक बंदा कमेंट में पूछ रहा है, सर हाउ मच एक्सपीरियंस आई रिक्वायर टू बिकम अ क्लाउड आर्किटेक्ट एंड व्हाट्स द फास्टेस्ट वे टू स्पीड अप माई जर्नी टू क्लाउड आर्किटेक्ट? फास्टेस्ट वे, ओके, वेरी ये दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन बाय द वे। फास्टेस्ट वे है, आप जाएं AWS पे अकाउंट क्रिएट करें। AWS पे आपने जैसे अकाउंट अपना बना लिया, उसके बाद AWS का है एक स्किल बिल्डर्स के नाम से। स्किल बिल्डर्स पे AWS ने क्लाउड प्रैक्टिशनर का जो सर्टिफिकेशन का कोर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कर दिया है। आप वो करें, आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा क्लाउड सर्विसेज का इमीडिएटली। उसके बाद AWS पे जब आपने लॉगिन किया होगा, वहीं डैशबोर्ड पे वो आपको ट्यूटोरियल्स दिखाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कि आप ये स्टेप्स फॉलो करें तो आप ये काम कर सकते हैं, ये स्टेप्स फॉलो करें तो आप ये काम कर सकते हैं। आप उन स्टेप्स को फॉलो करें। फिर जब आपने ये सब कर लिया, तो थर्ड चीज जो आप करें, सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट AWS का, वो भी कोर्स फ्रीली अवेलेबल है स्किल बिल्डर्स पे। फ्रीली अवेलेबल है, आपको किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। आप हो जाएं स्किल बिल्डर्स का कोर्स पूरा कंप्लीट करें। जैसे ही आप वो कोर्स करेंगे, यू आर रेडी टू गेट सर्टिफाइड इन सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट। और आपने जैसे ही वो सर्टिफिकेशन करी, तो अब आपके पास, जब आप ये लर्निंग कर रहे थे आप ब्लॉग्स लिख रहे थे, तो आपका एक्सपीरियंस था। अब सर्टिफिकेशन करने के बाद आपके पास प्रूफ भी आ गया है कि भाई मैं जो हूँ वो सर्टिफाइड क्लाउड इंजीनियर हूँ। तो आप जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। आपको एक जूनियर लेवल की जॉब तो इमीडिएटली मिल जाएगी, मगर अगर आप अपनी लर्निंग को कंटिन्यू रखें साथ में, तो आपको फिर थोड़े अरसे में आप एक सीनियर लेवल की भी पोजीशन ले सकते हैं, कि डिपेंडिंग ऑन क्या हाउ मच यू आर लर्निंग, राइट। अगर आपने सिर्फ वो कोर्सेज फॉलो करें तो जूनियर लेवल तो आप इजीली जॉब मिल भी जाएगी, और आप उस पर बहुत इफेक्टिवली काम भी कर सकते हैं। मगर सीनियर लेवल तक ऑब्वियसली उसके लिए थोड़ा सा आपको वर्किंग एक्सपीरियंस चाहिए होता है, 1-2 साल का। तो वो आप साथ में अपनी लर्निंग कंटिन्यू रखें। और जैसे पीयूष ने बोली एक बात, कि आप डिसहार्ट नहीं हो अगर आपको जॉब नहीं मिलेगी, राइट टाइम पे आपको जॉब मिलेगी। मैं फेसबुक से रिजेक्ट हुआ था, मेरे फेसबुक में 5 इंटरव्यू हुए थे, 5वें इंटरव्यू में उन्होंने मुझसे नेटवर्किंग पूछी थी, उस टाइम मेरी नेटवर्किंग स्ट्रांग नहीं थी, तो मैं ओके, फेल हो गया था। तो फेलियर्स आर पार्ट ऑफ जर्नी, उससे आप डिसहार्ट नहीं हो, उससे आप लर्न करें। जैसे पीयूष ने भी शेयर किया था, लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और लर्निंग जो है ना वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग होनी चाहिए, कभी भी लर्निंग शुड नेवर स्टॉप। एंड ऑल्सो जैसे आपने बताया कि वो फ्री स्किल बिल्डर का फ्री कोर्स है, सर्टिफिकेशन है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है, स्टूडेंट्स को रिसर्च ही नहीं करते, सो बिल्कुल, दिस इज गुड थिंग। बिल्कुल, यस। बिल्कुल ओके, ऐसा ही है। थैंक यू लोग सो पेड मच अमित। कोर्सेज पे जाते हैं कि यूडेमी से खरीद कर लें, यहाँ से खरीद लें। फ्री कंटेंट अवेलेबल है, इनॉर्मस अवेलेबल, बहुत ज्यादा तादाद में अवेलेबल है। यस, ओके, थैंक यू सो मच अमित भाई फॉर ज्वाइनिंग अस। आई थिंक एक सीनियर से इस तरह के यंग लोगों को सुनना और फिर उनको बताना कि किस तरह से करियर पाथ है, सो दिस इज वेरी कमेंडेबल। थैंक यू सो मच फॉर योर कम्युनिटी सर्विसेज एज वेल। आपके लिंक्डइन पे देखते रहते हैं, एंड अब लोगों के पाकिस्तान से बहुत मैसेज आने वाले हैं आपको लिंक्डइन पे, सो रेडी रहिएगा जवाब नहीं नहीं देने के लिए। बिल्कुल, नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, एनी चलिए, टाइम इंशाल्लाह थैंक यू सबकी सो दुआ मच रहेगी। ऑन द बिहाफ ऑफ डेफसिंक, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके गाइस, सो क्विज का रिजल्ट हम कल सुबह अनाउंस करेंगे अपने फेसबुक पोस्ट या स्टोरी में, सो स्टे ट्यून टू आवर सोशल मीडिया, एंड आवर जजेस आर इवेलुएटिंग द पार्टिसिपेंट्स, और उसके बाद हम इंशाल्लाह कल तक अनाउंस कर देंगे। कल सुबह आप लोग डेफसिंग की फेसबुक, लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम हर जगह पे आप देख सकेंगे विनर्स को, एंड वी विल शॉर्टली हम सबको इनवाइट भी करेंगे, जो जो विनर्स होंगे हमारे टॉप 10 विनर्स इन डेफसिंग ऑफिस, और उनको सारा ऑफिस विजिट करवाएंगे। इसके अलावा डेफसिंग स्वैग्स का तो आपको पता ही है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर फाइनल सेशन विद आवर डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग मिस्टर रहमत कादिर, सो स्टे ट्यून, विल बी बैक इन 2 minutes।
Ji, Assalamu alaikum everyone. Thank you so very much, Amnan and the team, for managing everything. I'm Rahmat Khadir, Director of Engineering at DevSync, and I have extensive experience in full stack development and DevOps. Um, I would like to thank Mr. Tejas Chopra, Mr. Piyush, and Mr. Hamidullah Khan for joining us today. They shared very good insights on DevOps, on especially जो हमारी audience है जो कि youngsters हैं, अंडर ग्रेड्स या ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने अभी करियर स्टार्ट करना अपना. आई होप दिस वाज अ गुड सेशन फॉर यू गाइस और काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा आप लोगों के लिए. मैं अपने सेशन में आई नॉट गो थ्रू व्हाट डेवऑप्स इज या व्हाट SRE is and what DevSecOps or DevQAOps is. I guess these topics are already discussed very well. मेरे से पहले जितने speakers थे, they do have shared some good insights on this and also shared their wonderful journey, which is amazing. I'll talk a little bit about your common questions asked through comments, and I'll also talk about a few, stuff that I have seen through my career. कि DevOps engineers को किस तरह के challenges आ रहे होते हैं, how they should proceed with it. सबसे पहले एक जो कॉमन एक मिसकंसेप्शन है कि जी आई एम नॉट गुड एट प्रोग्रामिंग, तो शुड आई परस्यू करियर इन डेवऑप्स और इन क्वालिटी एश्योरेंस. ये बहुत कॉमन है हमारी इंडस्ट्री में. मैं लोकल इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ. तो ऐसा है नहीं कि मतलब आप इवन डेवऑप्स में जिस तरह मेरे से पहले स्पीकर्स ने भी मेंशन किया, सो sorry, there are like a lot of options जहाँ पे आपको लगता है कि programming will not be required, but to scale in your career, आपको मज़ीद grow करने के लिए you definitely need these skills. So आप अगर आपको feel होता है कि you're not good at programming, you should actually start focusing on your programming skills. अगर स्क्रिप्टिंग आपकी अच्छी नहीं है, DevOps में आप कितना कुछ ग्रो कर लेंगे. डेफिनेटली स्टार्टिंग योर करियर इन DevOps, you might not need a lot of programming skills, but somebody asked कि जी मैंने अगर इसमें ग्रो करना है towards cloud architect or something like that, तो उसमें आप जब तक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस आपको नहीं पता, इफ़ यू डोंट नो एनी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लाइक पाइथन या रूबी या जावास्क्रिप्ट, किसी भी ऐसी लैंग्वेज में आप एक्सपर्टीज नहीं है, तो यू आर नॉट गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल. और फिर आपको अपने करियर में मज़ीद ग्रो करने के लिए काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है. सो दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. तो वो ये कभी सोच के आप लोग स्टार्ट ना करें कि जी मैं अगर प्रोग्रामिंग मुझे नहीं आती तो आई जस्ट स्विच टू डेवऑप्स करियर. नो, दैट्स नॉट द पॉइंट. दूसरी चीज़ सॉरी, मेरा आज ज़रा गला ख़राब है, तो यू माइट see me coughing a lot through the session. दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़, डेवऑप्स का फ्यूचर के बारे में काफ़ी लोगों ने क्वेश्चंस किए. फ्रॉम अकॉर्डिंग टू सम स्टैट्स ऑन द इंटरनेट, लास्ट एक साल में एंड इन इनिशियल क्वार्टर ऑफ दिस ईयर, इस इंडस्ट्री ने काफ़ी ग्रो की है. अप टू 60% ऑफ कंपनीज हैव स्टार्टेड हायरिंग डेवऑप्स इंजीनियर्स. और इस इंडस्ट्री में करंट जो पोटेंशियल एक क्वार्टर पहले तक का बताया जा रहा था, दैट इज़ अराउंड $7 billion, एंड जो एक्सपेक्टेड एक वो है जो एक्सपेक्टेड एक इसमें ग्रोथ या जो पोटेंशियल देखी जा रही है, दैट इज़ अराउंड more than $30 billion industry by 2027-28. तो डेफिनेटली ये एक ग्रोइंग करियर पाथ है. इसमें आप काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, काफ़ी एक्सेल कर सकते हैं. अब लुकिंग एट ऑल दीज, और फिर जिस तरह हमारी करंट इंडस्ट्री में ये एक ट्रेंड है कि जी अगर कोई बंदा प्रोग्रामिंग में, नॉर्मली कंपनीज में भी ये फॉलो किया जा रहा होता है कि जी अगर
कोई बंदा प्रोग्रामिंग में कोडिंग में अच्छा नहीं है, we'll just switch them to DevOps role, and they will just what they actually do is they just set up an EC2 instance और उसके ऊपर वो एक project deploy कर लेते हैं. That is not DevOps actually. DevOps is more than that. um, there is a difference between just setting up a machine जहाँ पे आप developer से ही पूछ करके जी उसमें local पे how they have set up their development environments, and just वही कोड आप उठा के डिप्लॉय कर देते हैं on production and you feel like I'm a DevOps engineer. So इस तरह से है नहीं. At DevSync जब भी हमारे new engineers जो join करते हैं, they start training in the DevOps department. So the department has complete plan for them कि जी किस तरह से उन्होंने सारी चीज़ सीखनी है. It's more about कि एक एजाइल टीम है जो कि डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रही है. उनका पर्पस सिर्फ ये है कि वो सॉफ्टवेयर, एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर विद फ्रीक्वेंट रिलीजेस डिप्लॉय करें और कस्टमर का जो भी फीडबैक है उसको एड्रेस करें. जो डेवऑप्स का रोल है वो थोड़ा सा उसे हटके है, जहाँ पे उनकी कोलैबोरेशन भी होती है विद इंजीनियरिंग, एंड दे एक्चुअली कम अप विद आइडियाज़ जहाँ पे लेट से जो इंफ्रा डिज़ाइंड है वो स्केलेबल इनफ नहीं है. So all these are actually the responsibilities of the DevOps team. जो DevOps टीम है वो रिस्पॉन्सिबल होती है इस सारी चीज़ की जी, इंफ्रा को पूरे को ऑटोमेट करना, इस सारे चैलेंज को अंडरस्टैंड करना कि जी अगर एक प्रोडक्ट है जो डेवलप हो रही है, ये अगर कस्टमर के लिए अवेलेबल नहीं है तो इट्स यूजलेस, राइट. तो अब इस सारी चीज़ को इंश्योर करना कि जी अगर आप सॉफ्टवेयर डिप्लॉय कर चुके हैं तो उसकी एंड टू एंड मॉनिटरिंग. लेट्स से मैं एक टेलीकॉम का सॉफ्टवेयर डिप्लॉय कर रहा हूँ जिसमें SMS करने की सर्विस है, बट आई डू सेंड अ मैसेज बट द रेसिपिएंट इज नॉट रिसीविंग इट, राइट. तो वो यूजलेस है. अब ऑल्दो जितना भी अच्छी कवरेज दे रहे हो, जितना भी उनके अच्छा प्लेटफॉर्म हो, लेकिन अगर वो एंड टू एंड वो मैसेज एज इट इज़ नहीं पहुंच रहा, व्हाट्सएप थोड़ी देर के लिए अगर डाउन हो जाता है तो मतलब उसका एक्सपीरियंस चाहे पूरा साल बेहतरीन रहा हो, लेकिन वो 30 मिनट्स का डाउन टाइम उनके लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है. सो ये सारी चीज़ें उसमें एंड टू एंड ये पूरा एक्सपीरियंस कवर किया जाता है. ये पूरा एक्सपीरियंस इस तरह से कवर होता है कि देयर आर सर्टेन वर्टिकल्स, डेवऑप्स, डेवसेकऑप्स, डेवक्यूएऑप्स, जो कि सारी चीज़ को मॉनिटर कर रहे होते हैं एंड टू एंड. और फिर इसमें काफ़ी सारे टूल्स आ जाते हैं जिसमें आप अपने जो भी इंफ्रा आपका है उसकी मॉनिटरिंग से रिलेटेड, जिस तरह हमीदुल्ला ने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन की इसमें AWS के हवाले से, चूँकि उनका उस पर ज़्यादा एक्सपर्टीज़ उनकी उसमें रही है. तो इसमें आपके सर्वर को लेट सपोज CPU कितना यूजेज कितना है, आपके मेमोरी का यूजेज कितना है, स्टोरेज कितना है, आपको किस टाइम पे स्केल इन करना है, किस टाइम पे स्केल आउट करना है, ऑल दीज एक्चुअली मैटर्स इन डेवऑप्स. तो इसके लिए आपको आपके एक्सपर्टीज़ होना, स्पेशली ऑपरेटिंग सिस्टम के, नेटवर्क के, एंड देन स्क्रिप्टिंग टूल्स के एक्सपर्टीज़ होना इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सो एट डेवसिंक व्हाट वी डू इज़ कि चूँकि ये एक ऐसी डोमेन है जहाँ पे एज अ फ्रेश जब आप स्टार्ट कर रहे होते हैं तो एज अ फ्रेश जब आप स्टार्ट कर रहे होते हैं तो आप बिल्कुल बेसिक जस्ट मैंने यूजुअली ये देखा हुआ है कि जी नॉर्मल प्रैक्टिस ये है, you will just subscribe a certification from AWS or GCP or even Microsoft, और वहाँ से आप कोर्सेरा से भी, यूडेमी से, कहीं से भी आपको एक सर्टिफिकेशन मिल जाती है जो आप सब्सक्राइब करते हैं. एंड पे आप एक एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, चंद MCQs के आंसर देकर आप को इतना आ जाता है कि जो आप इंस्टेंस सेटअप कर सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट डिप्लॉय कर सकते हैं. ना वहाँ से डेवऑप्स स्टार्ट होता है. यहाँ तक डेवऑप्स था नहीं, ये तो आपने सिर्फ उसकी बेसिक्स लर्निंग कर ली है. अब एक्चुअल डेवऑप्स वहाँ से आगे स्टार्ट होना है. जब तक क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन नहीं है, जब तक इंफ्रा की कॉस्ट रिड्यूस नहीं हो रही, इंफ्रा की अवेलेबिलिटी इंश्योर नहीं हो रही, इंफ्रा की स्केलेबिलिटी है नहीं, इंफ्रा की क्वालिटी इंप्रूव नहीं हो रही, तो यू आर नॉट एडिंग एनीथिंग
जिसमें आप जो है ना एज अ डेवऑप्स इंजीनियर कुछ डिफरेंट कर रहे हो। अगर एप्लीकेशन को जस्ट डिप्लॉय करके उसको लाइव ही करना था, एनी इंजीनियर कुड हैव डन दैट, राइट? जो कि अगर अपना डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेटअप कर सकता है तो वो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट भी सेटअप कर ही सकता है। कितना ही कोई मुश्किल होगा उसके लिए। बट द डिफरेंस यू मेक इज एक्चुअली आफ्टर दैट, कि एप्लीकेशन सेटअप हो गया, एप्लीकेशन डिप्लॉय हो गया, यू एक्जेक्टली नो व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ योर सर्वर, कितना लोड आपका सर्वर बर्दाश्त कर सकता है, हाउ यू वांट टू स्केल इन स्केल आउट योर सर्वर, और फिर आपकी जो सर्विसेज हैं उनकी स्केलेबिलिटी और रिलायबिलिटी को आप इंश्योर कर रहे होते हैं। तो जो डेवऑप्स की एक्चुअली जॉब है, इट्स मोर चैलेंजिंग देन डेवलपमेंट। इट्स मोर चैलेंजिंग देन डेवलपमेंट इन द सेंस के डेवलपमेंट में डेवलपर को का जो काम है वो QA टेस्ट कर लेता है, ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस उसकी होती है। तो वहाँ पे एक सेफ्टी बैरियर मौजूद है कि जी अगर यहाँ पे कुछ गलत हो गया तो देयर इज़ अ चांस दैट द क्वालिटी एश्योरेंस गाय विल हेल्प फिगर आउट द इशू एंड देन रिजॉल्व इट, राइट? बट नाउ कोड इज़ रेडी, एवरीथिंग इज़ फाइन, प्रोडक्शन रिलीज रेडी है, और यहाँ से आगे डेवऑप्स इंजीनियर की responsibility थी to make sure that CI/CD is properly configured and sorry about that. CI/CD is properly configured and now your application is live, right? So यहाँ से आगे अगर कोई चीज़ गलत जा रही है तो वो DevOps इंजीनियर के लिए काफ़ी complexities ऐड कर सकता है. So that's why the job is quite hectic and tough. So what we do is, what we actually practice is कि हम senior DevOps engineers को as a बडी साइन कर देते हैं अपने जूनियर इंजीनियर्स के साथ। हमने थोड़ा सा वो लर्निंग का और नॉलेज शेयरिंग का एक कल्चर डेवलप किया हुआ है। यूजुअली आपने देखा होगा हमारे यहाँ पाकिस्तान में और इवन नॉर्मली भी पाकिस्तान के अलावा भी काफ़ी नॉलेज शेयरिंग में लोग लैग करते हैं। द रीज़न इज़ कि वो आपका टाइम भी ले लेता है, एंड देन अगला बंदा उसकी लर्निंग कैपेसिटी क्या है, क्या स्पीड है, ऑल दैट मैटर्स। तो लोग उसको बहुत ज़्यादा तंग आ जाते हैं इस चीज़ से। हमने थोड़ा सा वो एक कल्चर सेटअप किया हुआ है डेवसिंग कि जी ठीक है, आप किसी भी टेक्नोलॉजी में, चाहे वो डेवऑप्स है या इसके अलावा है, देन यू वर्क विद योर सीनियर्स, तो उनके एक्सपोजर से आप काफ़ी कुछ सीख लेते हैं। सो इफ़ यू वर्क विद इफ़ यू जस्ट डू सर्टिफिकेशन फ्रॉम लेट्स से AWS, तो आपको उतनी ही नॉलेज है जितना कि उस सर्टिफिकेशन से आपको या आपकी अपनी R&D से आपने सीख लिया है, राइट? लेकिन इफ़ यू वर्किंग विद एन एक्सपीरियंस रिसोर्स, जिसका 5 साल 6 साल का ऑलरेडी एक्सपीरियंस है इन डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, नाउ इन दैट स्पेसिफिक सिनेरियो आपका एक्सपोजर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। आपका एक्सपोजर एज़ कम्पेयर टू जो एक बंदा, फ्रेश बंदा सिर्फ डेवऑप्स की सर्टिफिकेशन कर चुका है, उससे ज़्यादा होता है, ज़्यादा बेहतर होता है। यू एग्जैक्टली नो कि जी अच्छा, जो नॉलेज आपको ट्रांसफ़र किया जा रहा है आपके सीनियर से, वो काफ़ी वैल्यू ऐड कर रही होती है आपके ग्रूमिंग में। सो विल टॉक अ लिटिल बिट अबाउट सम क्वेश्चंस जो मैंने फ्रीक्वेंटली चैट के अंदर देखे, और आई वांट टू एक्चुअली आंसर दोज इन दिस सेशन रादर देन टॉकिंग अबाउट कि जी डेवऑप्स में किस तरह से होता है। एक तो क्वेश्चन पूछा गया हुआ था कि जी डेवऑप्स का फ्यूचर क्या है। आई ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट, दिस डोमेन हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, और इसमें काफ़ी जो है ना ग्रोथ है। तो यू कैन डेफिनेटली चूज दिस एज अ करियर, और यू शुड हैव एक्सपर्टीज़ इन एनी ऑफ दिस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। जो भी ग्रेजुएट्स हैं उन्होंने तो ऑलरेडी अपने कोर्स में कोई ना कोई अच्छी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पढ़ी होती है, पाइथन और रूबी, जावा, जावास्क्रिप्ट, एनी ऑफ दीज कैन हेल्प यू विद दैट। एंड आपको प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, जो बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट योर करियर। अगर बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है तो आप करियर में आगे बढ़ नहीं सकते। यू विल गेट अ जॉब, आप स्टार्ट कर लेंगे, आप ट्रेनिंग कर रहे होंगे, आपको के पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला उससे। सो दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि आप लाजमी जो है अपने बेसिक फंडामेंटल्स को अच्छे से समझ लें प्रोग्रामिंग के कि है क्या चीज़। एंड देन द लास्ट थिंग इज़ कि आपको लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन की चीज़ें पता हो, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड चीज़ें पता हो, आपको एक और चीज़ जो थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है डेवऑप्स इंजीनियर्स के लिए,
वो एक्चुअली है कि प्रोसेसेस की ऑटोमेशन करना। आप अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो डेवऑप्स इतना ही था कि जी सारा कुछ मैनुअली एक इंजीनियर डिप्लॉय कर रहा है, या छोटी सी लाइब्रेरीज हैं जिनके थ्रू मैनुअली डिप्लॉयमेंट्स की जा रही हैं। लेकिन रीसेंट टाइम्स में उसमें मेजर चेंज आया एंड काफ़ी सारी चीज़ें ऑटोमेट हो गई हैं। शेफ, पपेट, एनसिबल, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं। दैन रीसेंट टाइम में गिटअप एक्शंस आ गए, और CI/CD की काफ़ी हैं, सर्किल, CI ट्रेविस, सेमाफोर, मैनी अदर्स, जेंकिंस आ गए। ठीक है, ये सारी चीज़ें इन्होंने इंफ्रा को सारे को ऑटोमेट किया। बट इन नियर फ्यूचर AI इज़ गोइंग टू चेंज लॉट इन डेवऑप्स। AI ने काफ़ी कुछ चेंज कर देना है। AI ने इंफ्रा की कोड क्वालिटी इन चीज़ों को भी, डेव सेक ऑप्स और डेव क्यू ऑप्स को भी काफ़ी हेल्प करना है टू ऑटोमेट दीज थिंग्स। तो दीज आर सम थिंग्स जो कि मेरे ख्याल से डेवऑप्स का फ्यूचर डिसाइड कर रही हैं, जिसकी वजह से इस डोमेन में काफ़ी पोटेंशियल है। Then there was another question that what is the difference between DevOps? How is DevOps like different from agile methodologies? It totally मतलब दो different चीज़ें हैं completely. One is more about continuous integration, continuous delivery, continuous testing. And the other one is actually more about कस्टमर फीडबैक को देखना और रिलीजेस बेचना और सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट करना। ठीक है, वन इज़ मोर अबाउट कोलैबोरेशन, द अदर इज़ मोर अबाउट कस्टमर फीडबैक। सो थोड़े से डिफरेंट डोमेन्स हैं इसमें। ऐसा है कि सिमिलरिटीज़ तो डेफिनेटली हैं, सिमिलरिटीज़ हैं, देयर आर सम सिमिलरिटीज़ इन दिस के, जहाँ पे आप अगर बात करें तो डेवलपमेंट ही कर रहे हैं ये सारा कुछ, लेकिन डेवऑप्स जो है ना वो एक प्रैक्टिस है। ठीक है, और जो एजाइल है वो एक मेथोडोलॉजी है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द टू। जो डेवऑप्स है वो पूरा जो सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल है उस पूरे को कवर करता है। एजाइल जो है वो जस्ट एक मेथोडोलॉजी है जो कि सिर्फ प्लानिंग को, डिज़ाइनिंग और इम्प्लीमेंटेशन को कवर करता है, या रिलीज़ करना टू द कस्टमर उसको कवर करता है। एंड देन द अदर थिंग इज़ डेवऑप्स में ज़्यादा चीज़ें कोलैबोरेशन की आ जाती हैं, अजाइल में ज़्यादा चीज़ें डेवलपमेंट से रिलेटेड आ जाती हैं, इंजीनियरिंग से रिलेटेड आ जाती हैं। सो दैट इज़ द मेजर डिफरेंस। और इसकी बाकी डिफरेंसेस आई गेस दीज आर मोर देन इनफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ विल डेवऑप्स प्ले अ रोल इन सीमलेस सिक्योरिटी इंटीग्रेशन? हाँ, DevSecOps जो है दैट इज़ समथिंग, वो एक कह लें कि ये DevSecOps एंड DevQOps आर एक्चुअली एक्सटेंशन ऑफ DevOps. Extension of this DevSecOps actually adds a security layer in it, जो कि DevOps ही है प्लस एक्स्ट्रा सिक्योरिटी टूल्स इसमें इंटीग्रेट होती हैं, जिसमें आप डाटा की सिक्योरिटी, प्लेटफॉर्म की सिक्योरिटी इंश्योर कर रहे होते हैं थ्रू डिफरेंट टूल्स। एंड देन DevQOps में then again different tools you use to just make sure the testing of the platform and the code quality to make sure कि आप उसमें जो डिफेक्ट्स हैं उनको रिड्यूस कर सकें अपने प्लेटफॉर्म में। We'll also take a few questions from the comments. Do you send the certificate to those who attend this? Amnan will answer that. I don't think there is a certificate related to this webinar, so we're not going to send any certification. Although there was a quiz, so whoever is the winner of the quiz, the top 10 of those winners will be selected for some DevZing swag and visit to DevZing. पाइथन सीख लें, उमर फारूक ने जी क्वेश्चन पूछा है, C++ बेस्ट है या पाइथन सीख लें जी, इसका फ्यूचर भी ज़्यादा अच्छा है, तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू इन मॉडर्न जो अभी टूल्स आएंगे फॉर इवन ऑटोमेशन ऑफ डेवऑप्स, दोज विल आल्सो बी रिलेटेबल फॉर यू इफ़ यू लर्न पाइथन। ठीक है जी। इज़ डेवऑप्स डिफ़िकल्ट फॉर फ्रेशर्स? नहीं जी, डेवऑप्स स्टार्ट करने के लिए एज अ करियर इट्स रियली ईजी एंड सिंपल, बट इसमें मज़ीद ग्रो करने के लिए
it becomes a little bit challenging. इसके challenges मैंने आपको already बता दिए थे शुरू में ही. So I guess that clears the question. What is the best certification for DevOps? There is no one best certification for DevOps. It more depends कि आप खुद कितना सीख रहे हैं. Otherwise, what I'll prefer is कि जो अभी तक सबसे easy और commonly लोग कर रहे हैं वो AWS की certifications हैं. GCP and Azure also provides around $300 free credit when you sign up for their cloud infra, और वहाँ से आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं. तो इस तरह अगर आप स्टूडेंट हैं तो there are many free online services available जहाँ से आप सीख भी सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं. And then is DevOps automation reducing holding cost? Definitely it's reducing cost, but definitely जहाँ पे DevOps आ जाती है वहाँ DevOps की teams थोड़ी बड़ी होती हैं तो वो cost तो add होती हैं. But DevOps team में वो they do more than only just deploying your stuff to production. So that's something that adds a lot of value. Yeah, and I guess काफ़ी क्वेश्चन मैंने आंसर कर लिए हैं. There are a lot of people who are actually thanking for the summit. Thank you so very much for joining us. And how to get a chance for a fresher when every company wants experienced people? Rahat, Aman, no, that's not the case. Actually, you can join DevZing as a fresh graduate. We don't need experienced people. We can train people. We do have the expertise to train people in any technology. So definitely experienced लोग हर company मांग रहे होते हैं, but there are openings for fresh people as well. So fresh graduates can also join. And I would like to thank all the speakers. Mr. Teja, thank you so very much for joining and sharing your insights. You shared some amazing insights. Mr. Piyush, thank you so very much for explaining your journey so beautifully and sharing your insights. And Mr. Hamidullah Khan, thank you so very much for joining us today. Your insights and experience was amazing. And to all the listeners, thank you so very much for joining us. And also stay tuned for all those who have submitted the quiz. Stay tuned to our social media, and our social media team inshallah will share the results tomorrow, and those who are the winners, they will get invited to DevSing. Thank you so very much everyone.